for this 8th webinar on the topic acupuncture for treatment of allergic rhinitis. You will be glad to know that this is our 8th webinar. Continuously, we are organizing these webinars to spread this knowledge of acupuncture in this COVID times, because seminars and conferences are not possible. So we are organizing these webinars. It is a beautiful platform to spread the knowledge of acupuncture. And this efforts are made by the management of our hospital, Dr. D.N. Kotle's Acupuncture Health and Education Center, located in Ludhiana, Punjab. And this is the only first acupuncture indoor hospital in Ludhiana. And you will be glad to know that this hospital has got recognition from the WFAS, that is World Federation Acupuncture Society, which is a body of World Health Organization. And the efforts are continuously made by our management to organize these webinars. All the facilities have been provided by the management of the hospital to organize these webinars to spread the knowledge of acupuncture to everyone. And today's main spokesperson is Dr. Inderjeet Singh Dhingra, who is the head of this institution, Dr. D.N. Kotle's Acupuncture Hospital. And sir has an experience of last 45 years in acupuncture, and he is the founder of acupuncture in North India. Dr. Inderjeet has completed his masters in acupuncture from West Bengal, Australia, Switzerland, and China, and many other countries. So he's a great knowledgeable person, and he will be sharing his knowledge on the topic acupuncture for treatment of allergic rhinitis. And it is to inform everyone that today, because of some internet issues in many states of India, there is most of our doctors are unable to join because of the internet down issues due to Kisan Andolan. So we have received many calls from them. They will not be able to join. So we will be sharing the YouTube link of this webinar at the end of the session, so that if anyone has lost his connection or could not be able to join this webinar, will be able to see the video and the webinar and gain knowledge from acupuncture. I thank you all for joining this. Despite these internet issues, we have made our best possible to organize this webinar, and I hope you will get the knowledge from acupuncture for treatment of allergic rhinitis, because in these COVID times, allergic rhinitis is one of the most common problem occurring after post-COVID complications. So today, Dr. Inderjeet Singh will be sharing his knowledge on the treatment of allergic rhinitis. Over to you, sir. Thank you, everyone, for joining. Dr. Inderjeet, sir, please take the charge. Thank you, Dr. Ritik. And good evening to everyone. Today, we have a 8th webinar organized by Dr. Kotle's Hospital, Ludhiana. And we are trying to enhance the knowledge of our colleagues. Today, I have selected the topic acupuncture for rhinitis. And if we just say the common language, it is a simple cold. But this topic is very useful for all of us, because so many symptoms are related with our present virus problems. And post complications I have treated in my institution, and I will be discussed during the presentation, and very good results we have got it. So hope so you will get the knowledge. I received the message of so many our colleagues, especially from some area of the Haryana and border area of the Delhi. And few city is also disconnected by internet in our Punjab also. And few of our colleagues say, sir, if it is possible to postpone in the next Sunday. And for your knowledge sake, we have already fixed the next Sunday from our great and friend from the Australia, Dr. Tilak Kalraji. He will give the presentation on the headache problems treated with the acupuncture, diagnose how we can diagnose with the different system of medicine according to the modern medicine, according to the TCM, how we can use this. So today we have discussed
the problem related with the nasal problems, nasal problems. So thank you. So acupuncture is a treatment for allergy rhinitis. Commonly we can say कि it's a common cold. सिंपल से हम अपनी लैंग्वेज में जब बोलते हैं तो इसको कॉमन कोल्ड कहते हैं, बट इसके साथ ही बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं. जितनी भी बीमारियां हैं हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ हैं वो इस डिजीज के साथ इनिशियल है, और हमारे एक्यूपंक्चर सिस्टम के साथ राइनिटिस जो है डिजीज इज द फर्स्ट डिजीज who affect our lung system. Next. So presently when we discuss about the allergy disease, if we see the Indian situation, हमारे भारत में एलर्जी कॉमनली बहुत सीवियर केसेस में बड़ी तेजी से बढ़ रही है. उसका रीजन है कि पोल्यूशन है, एयर पोल्यूटेड एरिया है, हवा ठीक नहीं होने की वजह से, हमारी डाइट ठीक नहीं होने की वजह से, किसी एनिमल के बाइट करने से, और किसी तरह का भी एक्जिमा, इसको हम चमड़ी रोग बोलते हैं, आर्टिकेरिया, इस तरह की प्रॉब्लम से हमें एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं. राइनिटिस से ही हमें जो है अस्थमेटिक प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, जिसको हम दमा बोल सकते हैं, ठीक है, खांस की प्रॉब्लम बोल सकते हैं, चेस्ट प्रॉब्लम इन्फेक्शन बोलते हैं. सो उसी के साथ ये बीमारियां हमें आगे बढ़ती हैं. इसीलिए हमारे भारत में जो है ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, और हमारे ऊपर एक मेडिकल साइंस के ऊपर एक चैलेंज है, हाउ वी कैन क्योर, बिकॉज इन द मॉडर्न मेडिसिन जनरली व्हाट वी से दमा दम के साथ जाएगा, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में क्यूरेटिव वर्ड नहीं है, वो सिर्फ हम एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिनल पार्ट लेते हैं. बट एक्यूपंक्चर के द्वारा हम जो है, अगर हम हमारा डायग्नोज का टेक्निक जो है वो ट्रेडिशनल मोड ऑफ सिस्टम के ऊपर बेस करे, तो हम इसको परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ के रूप में हम देख सकते हैं. और इसमें जो मेरा अपना 45 इयर्स का एक्सपीरियंस कहता है, इट इज वेरी मिरेकल्स रिजल्ट्स. हम जब साइंस की बात करते हैं, साइंस में कुछ मिरेकल नहीं होता, बट एक्यूपंक्चर डू द मिरेकल ऑन द मैनी डिजीजेस. एंड आई हैव सीन स्पेशली in the asthmatic problems, common cold, rhinitis, many allergy problems can be controlled very soonly. So हम पहले ये डिस्कस करेंगे rhinitis होती कैसे हम फैलती हैं. हम एक इन्फेक्शियस डिजीज के रूप में भी इसको जानते हैं, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शन का मतलब है हमें कहीं से मिलती है, किसी दूसरी चीज से, एयर पोल्यूशन से मिल गया, या हमें किसी दूसरा व्यक्ति जो सफर कर रहा है उसकी वजह से हमें मिलती है. ओपी में हमारे जो डेली हम पेशेंट्स जब देखते हैं तो नेजल कॉम्प्लिकेशन कॉमन सी है, हमें भी यही लगता है. आज कोविड की जब हम बात करते हैं तो ये यार ये तो पहले भी होता था, खांसी जुकाम ये सब प्रॉब्लम होती थी, ये इतनी कहाँ से टेरर हो गया, लोगों को डरा हुआ, ऐसी कहाँ हम ऐसे करेंगे. तो बट यही चीज जो है हमें मेजर की तरफ ले जाती है, उसको हम आगे. इसमें सबसे पहले जो हमें पेशेंट्स को महसूस होता है नेजल कंसेशन, मतलब नाक जो है बंद होता है, घुटन महसूस होती है, ठीक है. दूसरा है बलगम के रूप में, हमारे जुकाम में हमारे साइनस जो है वहां पर बलगम के रूप में जमा हो जाती है. तीसरा जो सिम्टम हम देखने से रेगुलर सडनली आदमी बैठा है, बहुत ज्यादा स्नीजिंग, छींकें शुरू हो जाती है, और लगातार वो 100 से लेकर 200 छींक भी कंटिन्यू, कई बार आदमी को स्नीजिंग भी आती है. और इवन उसमें नाक में इरिटेशन होती है कि आदमी आपके साथ बात करने की भी कोशिश कर रहा है, वो अपना नाक को इरिटेट करके इचिंग की वजह से नाक को मलता है. इवन जो मेजर प्रॉब्लम्स जो देखी गई है, अगर यही कंटिन्यू रहेंगे, इसकी प्रॉब्लम को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो हमारा जो स्मेल पावर है, जो हमें नोज है,
वो हमारे स्मेलिंग पावर के लिए ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, ये भी इम्पेयरमेंट होता है, इसका भी फंक्शन जो है कम हो जाता है। और कई बार तो ये देखा है कि बहुत ज्यादा हो तो घंटा 2 घंटे 1 घंटे के लिए ये प्रॉब्लम होती है, बट इन कोविड, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, आई हैव इन मेनी केसेस, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, द इम्पेयरमेंट ऑफ द स्मेल हीलिंग जो पावर है वो कोविड के पोस्ट कॉम्प्लिकेशन में मेजर है। केस भी उनको नहीं पता लगता। ये एक हम इसको एलर्जी के साथ भी कोरिलेट करने की कोशिश करें। अब एलर्जी राइनाइटिस में हम लोग क्या कहते हैं, 2 चीजें, नॉन एलर्जी और एलर्जी को हम इस तरह कर देते हैं कि एलर्जी से जब होता है बहुत तेजी से बीमारी फैलती है। म्यूकस, हमारी जो नेजल कैविटी है, नेजल नाक के जो हमारे अंदर हम जब सांस लेते हैं तो नेजल एयर पैसेज में इरिटेशन बहुत होता है, बलगम इकट्ठी हो जाती है, रेडनेस होएगा, ठीक है, इरिटेशन महसूस होती है, जो हमें ये पता लगता है कि ये एलर्जी की वजह से ये इमीडिएटली प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम हम एक्सपोजर में जाते हैं तो बाहर कहीं धुआं है या पोल्यूशन है तो इमीडिएटली जो हमें नेजल फेरिंग्स सिस्टम को जो हमारा है इफेक्ट करता है, तो हमें ये प्रॉब्लम्स इमीडिएटली स्टार्ट होती है। नॉन एलर्जी में हम बोल सकते हैं कि क्या चीज है, क्योंकि हम ये एलर्जी से नहीं हुआ, ये इरिटेबली नेचर्स में है, राइनाइटिस कॉमन सिम्टम। इसमें जो सिविरिटी कम होती है, स्लोली जो है बीमारी जो है बहुत आराम से फैलती है, मतलब ऐसे लगेगा थोड़ा सा है, 2-3 दिन के बाद आपको ये एग्रीवेट होती है। नेजल फंक्शन को हम किस तरह करते हैं, सबसे पहले सब लोगों को पता है, हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तरफ से जाए तो हमारा फेस जो है, नोज के द्वारा हम नेजल कैविटी से हम सांस लेते हैं, जो फेरेंक्स और लैरेंक्स के रास्ते में ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया से ये ब्रोंकल्स में जाती है, ब्रोंकल से ये अल्टीमेटली लंग्स जो है हमें सांस की प्रॉब्लम्स को रोकता है। और सांस की प्रॉब्लम हमें समझ, ये हमारा एक मैकेनिज्म सिस्टम है कि हमें नेजल एयर पासेज जो है वो किस तरह इफेक्टेड होते हैं, और इस सिस्टम के साथ हमें क्या क्या चीजें हमारी जुड़ी हुई है, हमारी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेली वर्किंग में क्या है। सबसे पहला है हमें सूंघने की पावर, स्मेलिंग पावर जो है किसी तरह का जो है वो हमें इस सिस्टम के राही मिलती है। दूसरा ये इसी से फिल्टर होकर जो हम रेस्पिरेशन लेते हैं, वो भी हमारे जो नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसको उसकी तरह हम एयर को फिल्टर करने में भी कम करते हैं, ताकि जो बाहर की कुछ डस्टिंग वगैरह है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा, उसका कारण क्या है, हमारा वोकल सिस्टम, जब हम बोलते हैं तो ठीक है, इसको भी ये इफेक्ट करता है, कोई डस्ट या कोई धुआं या कोई जो लोग स्मोक कर रहा हो, कोई साथ में बैठा उसका धुआं अंदर ही करते हैं, तो हमें बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, गले में भी इरिटेशन होती है, बोलने भी। हाँ, आजकल हम ये देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में या लुधियाने बाकी क्लिनिक में भी आप लोगों को पता होगा, में 1 महीने में 2-3 केसेस वोकल पैल्सी के आ रहे हैं। उसके पीछे भी कारण हमारा पोल्यूशन है, एलर्जी है, जो नेजल सिस्टम के साथ रिलेटेड होती है, हमें जहां सांस की प्रॉब्लम करती है, वोकल कॉर्ड को भी पैरालाइटिक कंडीशन में ले आती है। हम एलर्जी राइनाइटिस को जो हम कॉमनली हम देख सकते हैं, ये सिंपली इंफ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द नेजल म्यूकोसा, मतलब जो हमारे अंदर का नाक का मसल्स हैं, उनके फाइबर्स हैं, उसमें जब कोई भी इंफ्लामेशन होती है, इंफ्लामेशन जब प्रॉब्लम कोई इनिशियली बीमारी अटैक करती है नाक, तो हमारी जितने भी एयर पैसेज हैं सबसे पहले उस पर अटैक होता है। उस पर जब अटैक होता है तो हमें किस तरह की महसूस, इरिटेशन महसूस होती है, थोड़ा बहुत रेडनेस महसूस, इरिटेशन होगी, स्नीजिंग हो सकता है, दूसरा नाक बंद हो सकता है, या बलगम इकट्ठी सकती है, स्नीजिंग हो सकती है। दीज आर द कॉमन सिम्टम जो है हमें डेली ओपीडी पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ये हाइपर सेंसिटिविटी में रिएक्शन करती है जो एलर्जी के साथ रिलेटेड है।
और सिंपल कंडीशन में हम जब सिम्टोमेटिकली कंडीशंस में ये बीमारी मेजर हमें जो ओपीडी में 4 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर, स्नीजिंग, बलगम का इकट्ठा होना, नाक में ईचिंग होना, खुजली होना, ठीक है, और नाक का बंद होना, ये हमारे लिए कॉमन सिम्टम्स है जो हमारे एलर्जी राइनाइटिस और बिना नॉन एलर्जी राइनाइटिस में भी मिलते हैं। फर्क डिफरेंस ये है, एलर्जी राइनाइटिस में हमें जो स्विरिटी है, हाइपर स्विरिटी, वो रिएक्शन ऊपर होता है, उसमें मेन जो है सिम्टम इमीडिएटली आते हैं, जबकि दूसरे में सिस्टम जो है सिम्टम है वो ग्रेजुअली एज कंपेरेटिव तो एलर्जी राइनाइटिस की बजाय नॉर्मली कुछ उसकी सिवियरिटी कम होती है। अब एलर्जी राइनाइटिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलर्जी डिजीज। हम जब इंडिया की बात कर रहे थे तो यहां तो प्रॉब्लम है, इस टाइम पूरे वर्ल्ड वाइज में ये प्रॉब्लम है। सो इसके ऊपर WHO भी चिंतित है कि अगर क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ रही है, हम जहां डेवलपमेंट करते हैं तो वहां दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, एयर पोल्यूशन भी होता है। अब पीछे हम ये वायरस कहते हैं ना कि चाहे किसी तरह की ये एनिमल से आया, ठीक है, कहाँ से आया, एयर से आया या किस तरह ये फैला, इसको भी जो है सिर्फ WHO भी चिंता, वर्ल्ड वाइज ये प्रॉब्लम एलर्जी की फैल रही है, जिसके ऊपर हमें बहुत अच्छा लगता है जब WHO बोलती है कि 2023 तक अगर हम अल्टरनेटिव सिस्टम को प्रमोट करते हैं जिसमें एक्यूपंक्चर सिस्टम नंबर 1 है, तो उसके द्वारा हम पूरे विश्व को अच्छी हेल्थ देने में कामयाब हो सकते हैं। यही कारण है कि एक्यूपंक्चर के लिए WHO की एडवोकेसी बहुत तेजी से पकड़ रही है, बहुत तेजी से उन्होंने इसको पॉपुलर किया है, ठीक है। एंड जो हम जब अराउंड द एरिया देखते हैं 10 से 25% पॉपुलेशन जो है कॉमनली ये इफेक्टेड है पूरे वर्ल्ड में। जब इंडिया की बात करते हैं तो ये यहाँ तो 20 से 30% कह रहे हैं, तो कॉमनली क्या है, ये 30 से 40% लोगों में ये कॉमनली प्रॉब्लम्स है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम इट इज सम एलर्जी डिजीज, तो कई बार क्या होता है कि कॉमनली हम लोग समझते हैं ये तो सिंपल है, ये ठीक हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये ठीक होती है, हर 5 व्यक्ति के बाद एक आदमी जो है इस राइनाइटिस से, कॉमन कोल्ड से, इन सिम्टम से इफेक्टिव हो रहा है। सो हमें इसके लिए, हमें ये मेजर करने के लिए और हमें ट्रीटमेंट का जो मोड ढूंढना है वो लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ के लिए देखना है, ताकि हम अपने आप को बेटर वे में दें। अब इसके रीजन उठता है इटियोलॉजी क्या है। देयर कैन बी सो मेनी रीजन, कारण इसके बीमारी के होने के कारण है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, एनिमल भी एक कारण है, एयर पोल्यूशन भी कारण है, ठीक है। और इस जो है हमें 2-3 के फैक्टर देखते हैं कि हमें कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, कि हमें इसका कारण क्या है, हमें किस तरह इसको कंट्रोल करना है, कि जो वो बाकी है एलर्जी सिम्टम को देखकर, नॉन एलर्जी सिम्टम को देखकर, दोनों को कंपेयर करके हमने इसको डायग्नोज करना है। कॉमन सी प्रॉब्लम है जो आजकल देखने में आ रही है, एलर्जी प्रेजेंटली इन्वायरमेंटल है। हवा में सबसे ज्यादा जो है एलर्जी, क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन है, स्मोक्स जो होता है, ठीक है, उनकी वजह से जो है हमें प्रॉब्लम है। दूसरा जो एलर्जी के केसेस देखने के हैं वो होम डस्ट, ठीक है। कई लोगों घर में जब हमारी बहनें, माताएं जब सफाई करती हैं तो हाउस डस्ट में जो है उससे भी हमें ये इरिटेशन, नेजल प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस होती है। दूसरा, जो लोग स्मोक करते हैं वो खुद तो इफेक्टिव होते हैं, वो दूसरों आने वाले लोगों को भी इफेक्ट करते हैं। स्मोक से ये प्रॉब्लम्स भी हमें जो एलर्जी की, राइनाइटिस की प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। दूसरा, एनिमल भी एक रीजन है, ठीक है, जो आप हम लोग देख रहे हैं कोविड की वजह से, जो हम लोग अभी तक यही आ रहा है कि ये एनिमल के द्वारा ये फैला है। तीसरा है इंडस्ट्रियल केमिकल, तभी हमके बायोकेमिक वेस्ट हो, उस तरह की वेस्ट को हम किस तरह डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ये इंडस्ट्रियल केमिकल से भी हमें प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो देखा जाए
कि जहां हम पूरे विश्व में पूरी अच्छी तरह डेवलपमेंट होता है, तो उसके साथ हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ बीमारियों के नए सिम्टम भी मिलते हैं, जिसे हमें रोकने की आवश्यकता है, उसको डायग्नोज करके आगे ले जाने की आवश्यकता है। अब भी सोशिंग फैक्टर है जो जेनरिक प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों में देखा है ये प्रॉब्लम पेरेंट्स से हमें बच्चों में गिफ्ट के रूप में मिलती है, कि हम लोग जब भी ओपीडी में हिस्ट्री लेते हैं फिर वही आ जाता है। सबसे ट्रीटमेंट से पहले, हमारा प्रिस्क्रिप्शन से पहले, सिस्टम को, ट्रीटमेंट को हमने सेटल करने से पहले हमें फुल हिस्ट्री लेना एक बहुत ज्यादा अच्छी तरह, ताकि उसमें हम लोग पूरी तरह 50% डायग्नोस हमारा बन जाता है, कि हम हिस्ट्री के द्वारा ही बीमारी का डायग्नोस आपका अगर ठीक हो जाता है, तो आपको सिस्टम के लिए टीसीएम के थ्रू पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में हमें हेल्प मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेनेरिक मीन जो पेरेंट्स है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है मल्टीपल इन्फेक्शन होती है। 50% केसेस जो है फैमिली हिस्ट्री इसमें एलर्जी में मिलती है, कि मदर को थी तो बच्चों को आगे होगी, फादर को तो थी। ये भी एक रीजन 50% जो इफेक्टेड केसेस हम देखते हैं उसमें भी है। दूसरा एंडोक्राइन प्रॉब्लम, कि जो फीमेल्स हैं, ठीक है, मीनोपॉज स्टेज आती है, जब पीरियड्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तो भी देखा है कि रिवर्स होने की वजह से भी हमें जो एंडोक्राइन सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है, या प्यूबर्टी टाइम जब स्टार्ट होता है, तो भी ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तभी हम लोग बोलते हैं कि आपको कब शुरू हुआ, ये कॉम्प्लिकेशन कब। तो इसमें हिस्ट्री को हमें लेना बहुत ज्यादा जरूरी देखना है। कुछ केसेस में हम लोग देखते हैं साइकोलॉजिकल, कहीं जो होता है, मैं जी उनके पास गया था, उन्होंने छींक मारी, मुझे भी ये जुकाम आ गया। तो ये एक सिस्टम है जिसको हम, और आजकल कोविड में हम लोग सभी करते हैं कि मास्क पहन के रखो, ये भी एक रीजन है। तो इट डज नॉट मीन कि क्योंकि वो जो आदमी सामने हमारे बैठा है वो रेस्पिरेशन ले रहा है, तो मे बी अगर उसको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसमें साइकोलॉजिकल के साथ साथ पैथोलॉजिकल भी हमें दोनों चीजों को कंसीडर करने की आवश्यकता। कंडीशन देखनी है, कहाँ हम कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तो ठीक है, उस चीजों को सिर्फ ये सोचे कि नहीं ये आपको सही। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में जब एलर्जी का कोई प्रॉपर डायग्नोज नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, तो एंटी हिस्टामिन वगैरह मेडिसिन दे दी जाती है। बट कई बार ये भी बोला जाता है ठीक है आप डाइट चेंज करो, अपना बिहेवियर चेंज करो, आप ठीक हो जाओगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम्स फिजिकली जब हमारे शरीर में होती है, तो एक्यूपंक्चर के थ्रू हमें बेसिक डायग्नोस हेल्प मिलता है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है रैपिड मूवमेंट्स होती है, टेम्परेचर चेंजिंग, सडनली आदमी अंदर बैठा एकदम ठंड में चला गया, ठीक है, उसमें क्या है, सडनली जो एक्सपोजर है उससे भी, रूम टेम्परेचर से भी जब हम बाहर जाते हैं, तो जैसे आजकल विंटर सीजन है, हम लोग नॉर्मली जो लोग हीटर वगैरह यूज करते हैं, तो अगर हीटर के आगे बैठ के वो सडनली बंद करने के बाद अगर हम बाहर जाते हैं, तो हमें जो 3-4 सिम्टम है उसमें से कोई भी चीज हमें इफेक्ट कर सकती है, हमारे शरीर को इफेक्ट कर सकती है, जो राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड अदर सो मेनी कॉम्प्लिकेशन जो है डिजीज हमारे शरीर में पैदा हो सकती है। जो इसके लिए सिम्टम जो है सिंपली जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला वही है छींके आना, स्नीजिंग, आंखों में इचिंग होना, जलन होना, नाक कान में इचिंग व खुजली होती है, नोज में इरिटेशन होती है, और पोस्ट नेजल ड्रिप्स, आदमी जब छींकता है तो कुछ बूंदे निकलती है, नाक से पानी की तरह ड्रॉप्स निकलती है, और हमें ये पता भी नहीं लगता ओपीडी में कि उसके कई बार उसको नहीं मिल रहा, बट उसको फीलिंग नहीं होता, क्योंकि सेंस भी उसका कई बार कम हो जाता, कहीं जैसे मगर नाक की कई बार घुटन भी महसूस होती है। इसके साथ साथ टेम्पोरल हेडिक, फ्रंटल हेडिक भी कुछ केसेस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारे लिए मेजर है सिम्टम, जो हमारे आज की प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार है, लॉस ऑफ स्मेल। जब आदमी कुछ समय के लिए राइनाइटिस की प्रॉब्लम से सफर करता है, तो उसका जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन, जब अगर एंटी हिस्टामिन या दूसरी प्रॉब्लम मेडिसिन वगैरह लेने के बाद, या कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेने के बाद, कई बार ये देखा है कि पेशेंट्स का
जो है स्मेलिंग पावर भी खत्म हो जाती है, ठीक है। और कोविड में ये मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है। ICMR ने भी क्लेम किया है कि जो कोविड के पोस्ट कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज्यादा केसेस देखेंगे हैं जो लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट के रूप में हमारे सामने है। सो वो चीजें। दूसरा, आंखों में जलन हो, पीछे हम लोग पढ़ रहे, पीछे आता जी आईज को भी कवर करके रखो जी, आईज से भी कोरोना के इन्फेक्शन हो सकता है। उसका रीजन था कि इसमें भी जब राइनिटिस प्रॉब्लम होती है हमारे सेंस ऑर्गन के ऊपर, एक्यूपंक्चर सिस्टम के साथ 5 सेंस ऑर्गन को इमीडिएटली ये इफेक्ट करती है। सो आईज जो है रेडनेस के रूप में आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, थकावट महसूस हो सकती है, ड्रॉजीनेस महसूस होती है। इवन ये सारा कुछ सिम्टम होने के बाद जब रात को प्रॉब्लम आती है, सोने के लिए रेस्ट करना चाहते हैं, या तो नाक बंद हो गई तो भी नींद नहीं आती, सांस रुकती है एकदम उठ के बैठ, तो इंसोमिनिया मतलब नींद की प्रॉब्लम का कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है जो मेजर है। कहने को हम लोग राइनाइटिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, बट इसका वही कि इसके जो आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम लोग लाइफ लॉन्ग इफेक्ट को झेल सकते हैं, पेशेंट झेलते हैं, तो उसको रोकने की जरूरत है। अब इसके साथ साथ जब हम कि कहा ये फेस के थ्रू हमने दिखाने की कोशिश की है, देखिए नोज का ब्रिज स्वेलिंग हो गया, आंखों को लोअर ईड्स जो है आईलिड स्वेलिंग है, ठीक है, नाक से जो पानी आता है या पतला या खाड़ा, उसका रीजन है कि जब अंदर साइनस हमारे ब्लॉक हो जाते हैं तो अंदर से प्रेशर पड़ता है, और जब एयर पैसेज सांस लेते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे स्किन के पोर है वो हमें ट्रांसमिशन, क्योंकि एक्यूपंक्चर के हिसाब से लंग हमारा जो ऑर्गन है वो स्किन को कंट्रोल करता है, एयर पैसेज को कंट्रोल करता है। जो स्किन प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बन जाती है, और यही कारण है कि आंखों में स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग, नेजल ब्रिज के ऊपर स्वेलिंग, और ये चीजें हमें कॉमन सिम्टम रूप में देखने को मिलती है। अब हम दो चीजें को देखने की जरूरत है, माइल्ड है कॉम्प्लिकेशन, ये माइल्ड है या बहुत ज्यादा मॉडरेट है या सीवियर है, एटलीस्ट हमें इसमें इनिशियली में जब माइल्ड होती है तो ज्यादा हमें किसी तरह का भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। हम नॉर्मली डेली एक्टिविटी काम कर लेते हैं, डेली काम करेंगे मतलब हम अपने ओपीडी में बैठे हैं, डॉक्टर अगर हम लोग सफर कर रहे हैं तो हमें कोई खास ज्यादा एक्टिविटी को डिस्टर्बेंस नहीं होती। मॉडरेट और सीवियर केसेस में हमें इमीडिएटली जो है सबसे ज्यादा बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती है, हमें ट्रबल्स के रूप में कुछ सिम्टम्स होते हैं। सबसे मेजर है हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। दूसरा, जब हम काम करते हैं अनइजी फटीगनेस जो है, हमें मेजर फीलिंग्स जो है काम में महसूस होती है, और हमें किसी से बात करने में भी प्रॉब्लम महसूस, अनइजीनेस महसूस होती है, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं तो उसमें भी हमें दूसरे की बात सुनने के लिए इग्नोर करते हैं। यहां तक हमने करने के बाद हम अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल डायग्नोज सबसे सेकंड जो मेजर है, सारा हिस्ट्री लेने के बाद हमें क्लिनिकल डायग्नोज में मेजर चीज क्या देखनी और क्यों देखनी। सबसे क्लिनिकल डायग्नोज में अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मेडिसिन वी गो फॉर द लैब टेस्ट अदर थिंग्स। दूसरा जो हम PCM के थ्रू देखते हैं कि हमारा बेन वही जीन और यंग इम्बैलेंस, ठीक है, सी हमारा कितना अप है, कितना हाइपर एक्टिविटी में, कितना हाइपो एक्टिविटी में, विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व, सिविलिटी ऑफ द, वो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द PCM। जो हम अपने डेली प्रैक्टिस में हम लोगों ने देखा 60 से 70% जो बीमारी है अगर हम प्रॉपर हिस्ट्री लें तो हम उसको डायग्नोज प्रॉपरली कर सकते हैं पेशेंट की हिस्ट्री देकर, कि ये जेनरिक प्रॉब्लम थी, किसी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम थी, या वर्किंग में जिस एरिया में वो काम कर रहा है उसकी बेसिक में कोई डैम्पनेस है, या किसी एक्सपोजर में या हार्ट में काम वट एवर वर्किंग में है उसकी वजह से नहीं। सो एक प्रॉपर हिस्ट्री जो है हमें 60 से 70% प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने में रोल अदा कर देती है।
सेकंड जो हमारे लिए है लैब टेक्निक्स, जो हम मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू थोड़ा बहुत हेल्प लेते हैं, ठीक है। कंप्लीट हम ब्लड काउंट्स करवाते हैं। उस कंप्लीट बाकी सिम्टम के साथ जो सबसे ज्यादा मेजर चीज हमें देखने वाली है, क्या इओसिनोफिल काउंट रेज हुआ है या नहीं। अगर आपके लंग सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी तरह का इन्फेक्शन आ चुका है और इस एलर्जी को आपके लंग्स को, थ्रोट को, नेजल को इफेक्ट किया है, तो हमारा इओसिनोफिल काउंट्स जो है वो इमीडिएटली रेज्ड हो जाता है। और यही जो है हमारे सबसे ज्यादा एक मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से ये डायग्नोज का पैमाना माना जा सकता है। तीसरा है हिस्टामिनिक टेस्ट। वो ही आ गया, किस चीज की एलर्जी है, हम लोग किस चीज से इनको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एक हिस्टामिनिक से डिफरेंट टाइप्स की हिस्ट्री को हम टेस्ट में मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू लेते हैं। दूसरा है जो नेक्स्ट जो है नेजल का, नेजल से जो नाक से आजकल हम देख रहे हैं कोविड में स्वैप लेकर अंदर से नाक से निकालते हैं, वो टेस्ट के लिए हम भेजते हैं कि इसमें ये नॉन एलर्जी है, ये एलर्जी राइनाइटिस है। इसका सिविलिटी इंक्यूबेशन पीरियड कहाँ जाएगा, बीमारी किधर जाएगी, कितना ठीक होगा, ये सिविलिटी को भी हम नेजल सिमिलर टेस्ट में स्वैप के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्किन एलर्जी। मॉडर्न मेडिसिन के साथ तो है ही है, क्योंकि बहुत से मॉडर्न मेडिसिन खुद मानती है कि कई ज्यादातर एंटी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डिजीज जितनी हैं, ब्रोंक्यूल वगैरह के लिए अस्थमेटिक ड्रग्स खाते हैं, कुछ सालों के बाद उनको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, ईचिंग हो जाती है, आर्टिकेरियस होता है। कि अगर वो आर्टिकेरिया और एक्जिमा को करेक्ट करने के लिए जब हम मेडिसिन देते हैं तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। उस चीज को वो मानते हैं, एडमिट करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मेडिसिन दे हैव नॉट ए प्रॉपर एक्शन बिकॉज दे आर नॉट कंसिडरिंग बॉडी एज ए वन यूनिट। सो अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम वी कंसिडर आवर बॉडी इज मेड अप विद द 5 एलिमेंट्स। ठीक है, हमारा सिस्टम भी जो एक्यूपंक्चर है, टीसीएम 5 एलिमेंट्स और जिन और रंग के ऊपर बेस करता है। ये बॉडी में हमारे 5 एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल बिल्डअप में काम करते हैं, नॉर्मल एनाटॉमी में काम करते हैं, फिजियोलॉजिकल में इसका रोल है, इवन पैथोलॉजिकल रोल है। तो पैथोलॉजिकल हम रोल किस तरह दे सकते हैं, फायर, हीट का संबंध जो है हमारा सीधा जो है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन से। हमारे 2 ऑर्गन हैं जो डायरेक्टली और इफेक्ट करते हैं, फायर के साथ रिलेटेड है, उसमें हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपकी हीट ज्यादा है बॉडी में, जहां हमें पल्पिटेशन होगी, घबराहट होगी, उसके अलावा हमें हार्ट कॉन्स्टिपेशन भी होगी, वो इट इज इंडिकेटेड डायरेक्टली इट्स ड्यू टू द एक्सेस ऑफ फायर इनसाइड द बॉडी। सेकंड जो हम कंसीडर करते हैं अर्थ। अर्थ जो है, क्योंकि हम लोग जो भी अर्थ में जहां से हम डाइट वगैरह लेते हैं, सारा कुछ हमें खाने के लिए मिलता है, हम अर्थ जो है हमारा स्टोमक और स्प्लीन के साथ रिलेटेड है। मतलब हमारे खाने के लिए, हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्टोमक है, डाइजेस्ट करता है, स्टोर है, और उस डाइजेशन के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बॉडी को हर हिस्से में सप्लाई करने के लिए जो हमारा ऑर्गन काम करता है, वो स्प्लीन है हमारा। अकॉर्डिंग टू टीसीएम, अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर साइंस है, स्प्लीन हैज अ मेजर रोल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। सो बॉडी को जहां एनर्जी की वीकनेस महसूस होती है, राइनाइटिस में फील उसका कारण है, इट मीन्स आपका स्टोमक एनर्जी डिस्टर्ब हुई, डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो भी एक रीजन बन सकता है। थर्ड हम कंसीडर करते हैं, जब मेटल 5 एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो मेटल में धातु के रूप में, ये नहीं कि लोहा हमारे अंदर है, हम जो भी है, ब्लड में भी आयरन है। सो इस तरह जो भी मेटल्स हैं वो हमारी इनर मल्टीविटामिन वगैरह में भी मेटल्स होते हैं अलग, हर चीज का मेटल हमारे में पाया जाता है।
तो जो मेटल का डायरेक्ट हमारे टीसीएम के थ्रू रोल है वो लंग्स, ऑर्गन और लार इंटेस्टाइन से है। यही कारण है कि अगर आपका मेटल बॉडी में किसी ऑर्गन में ज्यादा है तो स्टूल पास करते हुए पेन महसूस होती है, एनस, अराउंड द एनस पेन महसूस होती है। और उसके साथ साथ जब आदमी स्टूल पास करता है तो एकदम उसको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ती है, सांस फूलता है। उसका रीजन है कि वो मेटल जो है उसको लंग्स और लार इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। जो चौथा मेजर हमारा बॉडी का एलिमेंट्स है वो वाटर है, पानी है। पानी सबसे पहला हमने फायर की बात की थी, अब पानी अगर लुब्रिकेशन का काम करता है, हमारे बॉडी को फिल्टर करता है, हमारे बॉडी के सिस्टम को फिल्टर करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, अगर बॉडी में हीट ज्यादा है तो उसको बैलेंस करने में तो वाटर को मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द टीसीएम, अकॉर्डिंग टू द एक्यूपंक्चर, वी हैव मेजर टू ऑर्गन्स, दैट इज किडनी एंड ब्लैडर। द बोथ किडनी एंड ब्लैडर मेंटेन आवर वाटर मेटाबॉलिज्म, और इसमें इनडायरेक्टली हमारा लंग्स भी सपोर्ट करता है। इसके लिए वो हम बाद में बात करेंगे। सो वाटर मैकेनिज्म जो है, अगर किसी तरह की भी वाटर में हाइपर एक्टिविटी है तो आपको यूरिन ज्यादा आ जाए, कहते हैं ना, तभी कहते हैं कि ओल्ड एज में जब किडनी वीक हो जाती है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, रात को उठ के ओल्ड एज के बाद यूरिन पास करने में बार बार जाना पड़ता है। इट मीन्स किडनी हमारी वीक होती है। ब्लैडर की कंट्रोलिंग पावर भी खत्म हो सकती है कि अगर स्प्लीन ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी नहीं किया तो ब्लैडर का जो कैपेबिलिटी है उसको वो भी इफेक्ट में कंट्रोलिंग पावर लूज हो सकती है। पांचवा जो हमारा एलिमेंट है वुड है। वुड जो हम देखते हैं कि जितने भी प्लांट है हमेशा ऊपर बढ़ते हैं, कभी किसी या ऊपर या नीचे, मतलब डेवलपमेंट में, बॉडी की डेवलपमेंट में, बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करने में सबसे मेजर जो रोल है, नेक्स्ट पांचवा तत्व है वो वुड है। जो वुड है मतलब उसका हमारे ऑर्गन के साथ, लीवर और गॉल ब्लैडर के साथ इसका मेजर रोल है, जो बॉडी की डेवलपमेंट, कहते हैं ना बच्चे, कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं ये बच्चे की हाइट कम हो गई, सो इट मीन्स बॉडी में वुड की प्रोडक्शन कम है। यही कारण है कि कई बार बच्चों की हाइट छोटी। सो डिजीज को डायग्नोज करने के लिए हमें इन 5 एलिमेंट्स के ऊपर बहुत जरूरी तरह कौन से 5 तत्व हैं, किस ऑर्गन के साथ संबंधित है, उस ऑर्गन की क्या एनाटॉमी है, क्या फिजियोलॉजी है, सो हमें वो डायग्नोज करने की आवश्यकता है। अब जब हम राइनाइटिस की अकेली बात कर रहे हैं या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो मेजर 2 ही ऑर्गन्स हम लोग कंसीडर करते हैं। लंग्स जो मेन इसका रेस्पिरेटरी हमारा ऑर्गन्स है। स्प्लीन जो है हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, एक एनर्जी को दूसरी जगह के लिए सप्लाई करने। अगर किसी तरह की लंग्स ऑर्गन में, स्प्लीन ऑर्गन में या हमारी बॉडी में चीज जो है वो डेफिशिएंट है तो हमें कोई ना कोई ये प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, जो राइनाइटिस बन गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, एलर्जी हो गया, इवन एक्जिमा हो गया। क्योंकि लंग्स जब आपका काम कम कर रहा है तो बॉडी से जो मेटल है वो स्किन की तरफ बाहर निकल रहा है, जब स्किन के ऊपर आता है तो वो हमें एक्जिमा और ईचिंग वगैरह स्किन डिजीज बनाने में योगदान डालता है। इसके अलावा अब ये 5 एलिमेंट में डिस्टर्बेंस होगी, 2 ऑर्गन में, तीनों चीजों में डेफिशिएंसी, हाइपर एक्टिविटी होगी, वट एवर रीजन, जो ये सारा कुछ जो हमारा 5 एलिमेंट वाला सिस्टम है, हमारी जो बॉडी की 2 एनर्जीज है, जिन और यांग, उसको इम्बैलेंस करता है, उसके नॉर्मल फ्लो को ये डिस्टर्ब करता है। हम सिंपली लैंग्वेज में कह सकते हैं, disharmony of the yin and yang is the major cause for any disease of the body. Not only especially for the rhinitis, it is any disease when our body energy as a yin or yang
are imbalanced or impaired, any kind of disease can be attack on our body. ठीक है. अब नाउ हम देखते हैं कि जिंक ज्यादा है, यंग ज्यादा है, किस तरह के सिम्टम है. इफ द डिस्चार्ज प्रेजेंट, हम राइनिटिस की बात कर रहे थे, आपके नाक से पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी में yin might be inside is excess and while yang is less. जब ये वाटर का मेटाबॉलिज्म, जो जिंक पार्ट है, वो एक्सेस होने की वजह से जो है नेजल डिस्चार्ज, ईयर से भी, लुब्रिकेशन से भी, आंखों से पानी भी होने की वजह से ये इंडिकेट करता है कि जिन इज मोर इनसाइड, यंग एनर्जी इज लेस इनसाइड. And if the sign and symptom are related with the dryness, it's just opposite. Yang is more inside in the body, while yin is lost. It means yang ज्यादा है हमारे शरीर में, हमारी जो yin एनर्जी है वो कम हो गई है. कम हो गई मतलब कि उसने उसको कंज्यूम कर दिया, उसको ऑब्जॉर्व कर लिया है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हुआ है, इरिटेशन, ये सारियां कॉम्प्लिकेशन होते हैं. अब रिलेटेड हम करते हैं, इसको हम किस तरह टंग्स और पल्स के रूप में देख सकते हैं. ठीक है. प्रेजेंटली जो है डिस्चार्ज जो है अगर चल रहा है, तो अगर हम पल्स की बात करते हैं, पल्स कॉमनली आपको जब भी जुकाम होगा, पल्स वायरी होगी, कॉमन वीक होगा, बहुत स्लो रिदम से ये फ्लो करती है, और एक पतले वायरिंग में धागे के रूप में ऐसे लगता है कि बहुत बुरी तरह स्लो वीक में चल रही है. जो टंग की कंडीशन है स्लाइटली वाइट कोटेड होगा. ठीक है. एंड एजेस कैन बी रेडनेस, और अल्सरेशन जो है हमारे साइड में, क्योंकि हमारा जो जीभ का साइड में है वहां पर स्प्लीन, लीवर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, गॉल ब्लैडर होता है, जहां पर हमें अल्सरेशन पैदा हो जाती है. इन बिटवीन द जो वाइट कोटिंग की भी हम बात करते हैं, इट इफेक्ट द शो द इफेक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द स्प्लीन एंड स्टोमक. अगर आपकी अनडाइजेशन है, ठीक है, स्टोमक के अंदर फूड पार्टिकल इकट्ठा हो रहा है, तो आपकी वाइटनेस जो है लिटिल बिट ठीक होगी. अगर स्प्लीन वर्किंग ठीक है, स्टोमक की वर्किंग पर, तो उसमें आपकी थिन जो है कोटिंग होगी. तो इस कोटिंग भी जो है हमें ये सारा टिप्स का जो हमारा रिलेशन है वो हार्ट और लंग्स के साथ है. जनरली हम कंसिडर करते हैं जो फ्रंट टिप्स है वो हार्ट को इंडिकेट करती है, बट लंग्स के साथ, क्योंकि हार्ट ही स्पेस, लंग्स ही स्पेस देता है जो हमें रेस्पिरेशन को नॉर्मल रखने में काम करती है. कोई व्यक्ति जब जुकाम हो जाता है, हम कहते हैं ये बोलने में इसकी वॉइस कम हो गई, बड़ी लाइट वॉइस होगी. हम लोग कभी नहीं काउंट करते, वैसे ये कहते हैं आदमी को बुखार है, जुकाम है, खांसी है, तभी कम बोल, बट नहीं, वो हमारा जो लंग्स का जो हमारा फंक्शन है सेकंड, वो किडनी को भी मेंटेन कर, वाटर मेटाबॉलिज्म में भी हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेंटेन करता है. जब उसमें यिन और यंग इम्बैलेंस होती है तो हमारी वॉइस में भी कम होता है. वॉइस में लास्ट एंड ऑफ द जो हमारी टंग है वो रूट के ऊपर इफेक्ट करती है, जिसमें हमें बोलने में भी प्रॉब्लम्स होती है, और जो स्लगिश वॉइस दबेगी. ठीक है. और क्रैक जो है, दबने का मतलब है कि हमारा जो डिजीज है वो किडनी ऑर्गन तक भी इफेक्ट कर रही है. तो ये सारी चीजें टीसीएम में पल्स के थ्रू, 5 एलिमेंट्स के थ्रू जब हम देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि बीमारी की सीवियरिटी किस स्टेज तक पहुंच चुकी है. ठीक है. और नेजल डिस्चार्ज मतलब नाक से पानी नहीं बह रहा, इकट्ठा हो रहा है, जीभ के ऊपर क्रैक्स बन गए हैं, ड्राइनेस आ गई है, पल्स लगिश टाइप में है, ये सारा कुछ इंडिकेट करता है कि बॉडी में यंग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी में है, जिन की डेफिशिएंसी. सो ये इसका पर्पस क्या है, हम लोग क्यों ये डायग्नोज करते हैं कि यंग और जिन, मतलब बॉडी के मैकेनिज्म को बैलेंस, अगर जिन और यंग बैलेंस होता है तो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी का फंक्शन
इस नॉर्मल होता है। ना सिर्फ आपकी एक प्रॉब्लम ठीक होती है, बॉडी का सिस्टम ठीक होता है। सो एक्यूपंक्चर में, पीसीएम में हम बॉडी के सिम्टम, डिजीज के सिम्टम नहीं ठीक करते, बॉडी का सिस्टम ठीक करते हैं। कई बार हमें पेशेंट कहता है सर ये प्रॉब्लम तो थी, इससे पहले मुझे ये प्रॉब्लम थी, वो भी फर्क पड़ गया। उसका रीजन है कि हम लोग बॉडी को एक वन यूनिट के रूप में कंसिडर करके ये सारी चीजें जो टीसीएम में हमें हेल्प करती हैं। अब हमारे ट्रीटमेंट के दो चीजें, जहां हम बीमारी को ठीक करते हैं, हम प्रिवेंशन के लिए है कि बीमारी को आगे ना बढ़े, बीमारी को प्रिवेंट किया जाए कि इस बॉडी को नेक्स्ट इन फ्यूचर में ये रीअकरेंस ना हो। कई बार देखा है कि एलर्जी प्रॉब्लम्स जो होती है, कॉमनली देखते हैं कि जब थोड़ा क्लाइमेट चेंज होता है तब प्रॉब्लम्स होती हैं। 2-3 महीने बाद जी शुरू हो जाती है, बरसात आ गई तब शुरू हो गया, गर्मी आ गई तब शुरू। बट यही प्रॉब्लम कुछ समय के बाद जब हम सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के ऊपर बेस करते हैं तो उसकी वजह से ये परसिस्ट होकर कंटिन्यू इंक्रीज हो जाती है और फॉर एवर हमारे जो प्रॉब्लम्स हमें 2-3 महीने में एक आध बार होती थी वो रेगुलर हो गई। ये कहते हैं ना सांस की प्रॉब्लम हुई, ये पहले तो सीजनल अटैक होते थे, सीजनल प्रॉब्लम्स होती थी, अब तो मुझे रेगुलर रहने लग गया। सो दीज आर द रीजन, क्योंकि हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू सिम्टोमेटिकली रिलीफ देते हैं कि आपकी बॉडी उस टाइम में इम्यून सिस्टम आपका कवर कर गया तो आप लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ हो गए। बट मॉडर्न मेडिसिन में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी कुछ नहीं है, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू टीसीएम, अकॉर्डिंग टू अवर एक्यूपंक्चर थ्योरी, वी आर जस्ट बैलेंसिंग आवर एनर्जी, बैलेंसिंग आवर ची, बैलेंसिंग फ्लो ऑफ द ब्लड। सो दीज आर द लेवल जो है हमें नॉर्मल लेवल, जो हमें 3 चीजों जीन और यंग का और ची और ब्लड का बॉडी में इसको नॉर्मल करना है। किस तरह करना है, कौन से पॉइंट ठीक करने, ये चीजें सारी हमें इसके ऊपर बेस करता है कि आपने किस हिसाब से हिस्ट्री ली है, किस हिसाब से आपने एलोपैथी एंगल के हिसाब से भी इस डिजीज को मेजर किया है या नहीं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द टीसीएम के हिसाब से आपने इसको डाइज करके दोनों को कंपेयर करके देन वी हैव ए प्रोटोकॉल हम बनाते हैं कि हमने इस हिसाब से, हमने फर्स्ट सिम्टोमेटिकल रिलीफ देने के लिए ये चीज करनी है, सिस्टम को ठीक करने के लिए इस तरह, मतलब ताकि हम लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ दें। क्योंकि एक्यूपंक्चर से इमीडिएटली अगर हम चाहें तो वेरी फर्स्ट डे भी रिलीफ दे सकते हैं, बट दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज सिम्टोमेटिकल रिलीफ। अगर हम चाहते हैं कि ये पेशेंट हमारे पास दोबारा ना आए, लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ हो, दैट इज ओनली पॉसिबल when we treat as a systemic. So systemic ट्रीटमेंट के लिए फुल क्लासिकल एक्यूपंक्चर जो हमारा टीसीएम बेस्ड सिस्टम है उसके ऊपर 8 प्रिंसिपल साइंस, सो जितने भी हमारे डिफरेंशिएशन ऑफ डायग्नोस के मेथड है, हमें कुछ ना कुछ उसमें से ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है, जिसको हमने कोरिलेट करके अपने। सो एज पर मुझे नहीं पता, मैं क्लेम करता हूं एक्यूपंक्चर इज ए giving relief to of any disease from long lasting and without any side effect. In my 45-year experience, I have met so many my old patients, they are visiting to our clinic after 20 years. तो वो प्रॉब्लम थी, इवन कई बार हमें भी भूल जाता है कि इसको सर वो तो उसके बाद नहीं हुई, अब ये एक नई चीज आई, तो आपको भी अच्छा लगता है। ये मत सोचो कि पेशेंट आपके ऊपर डिपेंड रहे, ये सोचो कि एक्यूपंक्चर से अगर हम उसको लॉन्ग लास्टिंग करते हैं, ना सिर्फ उसका बेस, उसकी बिलीविंग एक्यूपंक्चर सिस्टम के ऊपर बढ़ेगी, बल्कि आपके ऊपर भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके लिए हमारे लिए टारगेट ये होना चाहिए, जो भी पेशेंट आया है, जो भी मोड ऑफ द ट्रीटमेंट हमने लेना है, जो भी सिलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स करने हैं, जो भी डायग्नोज करना है, हमें ये चीज सोच के करनी है कि हमने इसको परमानेंटली लिख देना है। सो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे आम रिवायत है, दमादम के साथ जाता है, इसको एक्यूपंक्चर ने काटा है। इवन इतनी इन 92 में आई शेयर वन एक्सपीरियंस, माय हेल्थ डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर विचित्र सिंह, प्रीवियसली ही वाज द सिविल सर्जन इन लुधियाना, तो मेरा ही अस्थमे के ऊपर एक टीवी के ऊपर इंटरव्यू था, तो उसकी वाइफ ने मुझे बोला सर
ये तो 10-12 स्टीरॉइड सुबह खाते हैं तब जाके इनकी हालत होती है। ठीक है, आपकी इमीडिएटली ये बॉस नहीं है, बट आपके साथ फ्रेंडशिप है कि आप क्लेम कर रहे हो कि एक्यूपंक्चर से ठीक होता है। तो आप मानोगे, मैंने 15 दिन ट्रीटमेंट उनको दिया। 15 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद उनकी मोर देन 70% मेडिसिन जो स्टीरॉइड के रूप में ले रहे थे, एंटी हिस्टामिन के रूप ले रहे थे, वो ब्रोंकोडायलेटर के रूप में ले रहे थे, वो बंद हुई। और उसकी एफर्ट्स देखिए आपको कहीं ना कहीं मिलती है। एज ए सिविल सर्जन, एक्यूपंक्चर इन 1984 में कुछ नहीं था, एक्यूपंक्चर रिकॉग्नाइज नहीं था, एक्यूपंक्चर का लोगों के पास ज्यादा नाम भी नहीं था। एज ए सिविल सर्जन ही रिकमेंडेड वन प्रोजेक्ट फॉर अवर इंस्टीट्यूशन, उसमें 80,000 रुपया की इस एक्यूपंक्चर सिस्टम के लिए आप दीजिए। ग्रांट हमें सेंट्रल मिनिस्ट्री से मिलनी थी। सेंट्रल मिनिस्ट्री से मैंने सर को बोला, मैंने सर यहां से कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। आफ्टर 2-3 years he became a director of the पंजाब हेल्थ सिस्टम एंड आई मेट देम। सर इंद्रजीत वो पैसे आ गए थे? मैं नहीं सर, मैंने तो आपको बोला था कि गवर्नमेंट अभी एक्यूपंक्चर को देगी, ये पैसे हमें नहीं देंगे। आई एम रियली थैंकफुल टू कि डॉक्टर बचित्तर हेल्थ सर्विस ने अपने कमेंट्स देकर कि मैं इतना स्टीरॉइड खाता था, मैंने इतने दिन ट्रीटमेंट लिया और मुझे ये बेनिफिट मिला। और आप सबको खुशी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट जो है एज ए प्योरली एक्यूपंक्चर नाम के ऊपर हमें 80,000 रुपए की ग्रांट भेजी थी, जो आज भी हमें यही है। डॉक्टर DN कोटनेस को हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट में उस चीज के नाम की वजह से रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब, आपको ये बात बताने का मतलब था कि हम ये चाहते हैं कि आपके आगे भी टारगेट ये होना चाहिए। ये मत सोचो कि मुझे से कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे नहीं समझ। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द अदर कोलीग्स। कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। नॉलेज लेने के लिए हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं। आदमी मरते दम तक नॉलेज। तो हमारा टारगेट सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ होनी चाहिए, परमानेंट रिलीफ होना चाहिए। जहां अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस की भी बात होती है, तो मैं यहाँ एक चीज ये भी शेयर करना हूँ। 3-4 डॉक्टर्स हैं जो यहाँ रैन 17 पे ट्रीटमेंट देखी करते हैं। उसमें से आपके ASA के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनीस हैं, कोटा से हैं, डॉक्टर नागपाल हैं जयपुर से, ठीक है, और मैं भी करता हूँ तो दिल्ली में एक डॉक्टर दिल्ली में। सो वी हैव ओनली सिलेक्टेड। सो हम ये चाहें कि, क्योंकि उसमें क्या है कि सिर्फ में 1 महीने में एक बार बुलाना पड़ता है तो पेशेंट ठीक हो जाता है, तो कई बार मल्टीपल नाम बुलाने के चक्कर में कि बहा नहीं आएगा। तो ये भी नहीं सोचना, हमने ये सोचना है, हमने एक्यूपंक्चर की डेवलपमेंट के लिए हमें लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ की तरफ, लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम की तरफ अडॉप्ट करने की जरूरत है। अब एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की जब बात कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी राइनाइटिस, कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं, इंसियम, LI20, DU23, LI4, Extra 1, Extra 2, GB20, LU7, REN7, these are the major point। ये पॉइंट्स जो हैं, इसके अलावा इसमें जब दोबारा होता है तो कुछ पॉइंट हम एंटी, मतलब बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए भी हेल्प करते हैं, जिसमें LI11, GB20, GB34, स्टोमक 36 इज अ मेजर पॉइंट, जिससे हम लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ परमानेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लंग्स और स्प्लीन को टोनिफाई करके, जो हमारा प्रिंसिपल है किस तरह की एनर्जी है उसको लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ देने में हेल्प करते हैं। ये जो पॉइंट सारे हैं, इट डज नॉट मीन्स कि ये पॉइंट जो हमने सारे एक बार आपके सामने 10-12 पॉइंट्स बताए हैं, ये वन सिटिंग में नहीं, एक सिटिंग में नहीं, ये आपने अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द जो है सीवियरिटी, लॉन्ग लास्ट कब कितने क्रोनिक है, उस हिसाब से हम पॉइंट्स को जो है को रिलेट करते हैं, जो कॉम्बिनेशन करते हैं वो इसका मेजर जो नेक्स्ट है कि मेजर पॉइंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट अब ये इसका कॉम्बिनेशन कहना, ये एक मेजर रोल है जो हमें डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट पेशेंट के हिसाब से करना पड़ता है। लोकेशन सारे ही जानते हैं,
LI20 जो है हमारा नेजल कंजेशन के रूप में जहां हेल्प करता है। सेकंड, जो LI20 का मेन रोल है, नाक का पानी बह रहा हो तो भी वो बंद करता है अगर चल रहा है, तो दोनों चीजों में। सो नेचर क्या है, इमीडिएटली नेजल कंजेशन, अगर नाक को खोलना है तो LI20 हमें खोलता है। बट अगर आप नाक के बंद कंजेशन को तो देख लिया, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, ये कंजेशन क्यों हुई है, उसके लिए आप कॉम्बिनेशन का पॉइंट नहीं प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग। अदरवाइज आपका 1-2 सिटिंग में उसको रिलीफ मिलेगा, बट अगर कॉम्बिनेशन आपका ठीक है तो आपको ये लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलेगी। इसी तरह हम DU23 की जब बात करते हैं, तो अगर उसकी सिम्टम्स जो है, हेडेक भी है, नॉन कंजेशन है, ठीक है, वो बलगम थोड़ी आती है, निकलने में प्रॉब्लम्स होती है, तो हमें ये एक पॉइंट भी सिलेक्ट करना है। डिजिटल पॉइंट के रूप में जो मेजर पॉइंट है वो LI4 है, जो ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें हम कम करते हैं। LI4 not only help to cure the symptoms, cure the system of the body, it also help to increase the immune system of the body. So हमें ये मेजर चीज है LI4 के साथ जो दूसरा पॉइंट लेना है, आपकी सिर्फ नेजल कंजेशन है LI20 और LI4, और इसके साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट हमें जरूरत है वो अपने, अगर आदमी को वीकनेस महसूस होती है देन वी ऐड स्टोमक 36। अगर वीकनेस नहीं महसूस होती, नॉर्मल है, तो देन वी हैव सेलेक्ट द GB34। These 3 points can increase the immunity also of the body. नेक्स्ट हमारा है एक्स्ट्रा 1, एक्स्ट्रा 2। एक्स्ट्रा 1 जो है, जनरली आदमी को, जब आपको रात को आप सोते हो, किसी को प्रॉब्लम्स है जी, मैं सिर नीचे बेड पे रखता हूं तो सांस रुकने लग जाती है, मुझे उठ के बैठना पड़ता है, नींद नहीं आती, देन एंजाइटी है, ठीक है, और फ्रंटल हेडेक होता है, सफोकेशन होता है, इन सारी चीजों के लिए एक्स्ट्रा 1 पॉइंट विद LI4 इज वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। अब इसके साथ दूसरी बात करते हैं, गले में इरिटेशन है, सांस की प्रॉब्लम है, टेम्पोरल हेडेक है, नेजल प्रॉब्लम्स है, और थोड़ी बहुत कफ भी है, तो हमें क्या है उसके साथ LU7, लंग 7, LI20, अगर नींद की कंप्लीशन है एक्स्ट्रा 1 नहीं है तो REN 70 हम साथ कॉम्बिनेट करेंगे। कौन से भी पॉइंट बन गए, अगर आपको कफ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, नेजल की कंजेशन भी है, हमारे लंग 7 के साथ REN 17 नंबर 1, LI20 अगर नाक में कोई स्टफी है या कंजेशन महसूस होती है, ये हम पॉइंट करेंगे। बॉडी में वीकनेस महसूस होती है, स्टोमक 36, अगर बॉडी में वीकनेस नहीं है, नॉर्मल आपको लग रहा है, सिर्फ ऐसा लगता है कि इसकी वजह से अनइजीनेस है, देन वी ऐड GB34, यंग लिंग क्वान। एंड नेक्स्ट, अब आपके साथ सारे कंबाइंड सिस्टम है, मेरा नेक भी, सर्वाइकल एरिया भी जकड़ में है, स्पाज्म में है, यूं करता हूं मैं, यूं करता हूं, सर फट रहा है, कॉमन कोल्ड से कभी मुझे नाक से पानी बहने लग जाता है, कभी नाक बंद हो जाता है, कभी हेडेक होने लग जाती है, आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, पेन होती है, ईचिंग होती है, तो इस सब के लिए जो हमने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट करना है GB20 LI4। एंड अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, साथ में एक्स्ट्रा 1 और DU20। No need to select other points. These only few points can be help you in this. Okay. So next we come. यहां हम डिस्कस कर रहे हैं स्प्लेन 6 की, एक्स्ट्रा 2 की,
LI11 की, GB34 की, स्टोमक 36 की, जिसको मैंने आपको बीच में किया। अब इन सारे पॉइंट्स के अलावा आपके सिम्टम जो बीमारी के थे वो ठीक हो गए। नेजल कंजेशन भी ठीक हो गई, नाक से पानी आता था वो भी ठीक हो गया, आंखों में स्वेलिंग थी वो भी ठीक हो गई, हेडेक भी ठीक हो गई, आपको नेक में स्टिफनेस थी वो भी ठीक हो गई, बॉडी में वीकनेस महसूस हो रही वो ठीक। ये तो हो गया, आपने डिजीज को कंट्रोल कर दिया। नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर ए गैप ऑफ 10 days, you give one another course of treatment for 10 days. That is just for increase the immunity. Their symptoms, पॉइंट्स जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है। ये कोविड वाली प्रॉब्लम भी मैंने इससे ठीक की है, तो ये सिम्टम भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें पॉइंट है LI11, GB20, DU14, UB12 एंड GB34। इसको सिंपली आप हाथ के द्वारा मैनिपुलेट कर भी छोड़ सकते हैं। हर 5 मिनट के बाद इसको मैनिपुलेट के 20 मिनट्स का ट्रीटमेंट दीजिए। 10 दिन के बाद ये गारंटी, ये प्रॉब्लम्स जो इसकी ठीक हो गई है दोबारा रीअकरेंस नहीं होगी, ये जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। बट बी सीरियस, आपका जो हिस्ट्री लेने में मेजर रोल है, हमारा डिजीज को ठीक करने में हिस्ट्री हमारा मेजर रोल अदा करती है। दूसरा, हमें डायग्नोज के हिसाब से जहां मॉडर्न मेडिसिन की थोड़ा बहुत हेल्प लेना है, हमें अपने TCM के थ्रू डायग्नोज करके सिलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स इज द मेजर रोल। जनरली क्या होता है, जितने भी हम लोग क्या करते हैं, बुक्स में 20 पॉइंट लिखे तो हम 20 पॉइंट में से 15 लगा देते हैं। बट वाई 15? कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक पॉइंट दूसरे को काट देता है। जो उसने उसको ठीक करना है, दूसरे ने उसको वो पैदा करना है। क्यों? एक्यूपंक्चर से हम जहां डिजीज ठीक कर सकते हैं, अगर इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट है, इम्प्रॉपर सिलेक्शन है, इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट है, तो डिजीज पैदा भी हो सकती है। एक्यूपंक्चर जो है आपको परमानेंट रिलीफ तभी देता है आपका केस टेकिंग हिस्ट्री बहुत प्रॉपर ढंग से ली हो, TCM का डायग्नोज ठीक किया हो, आप पेशेंट्स को लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ दे सकते हो। अब सवाल जहां तक हमने किया, नेक्स्ट जो मेजर रोल है, सिलेक्शन भी आपने, हिस्ट्री भी ले ली, डायग्नोज भी कर लिया अकॉर्डिंग TCM, पॉइंट भी आपने सिलेक्ट किया, प्रोटोकॉल भी बना लिया कि आपने फर्स्ट कोर्स में क्या देना है, सेकंड में क्या देना है, थर्ड में क्या देना है, एंड फाइनल में क्या देना है। बट हमें यहाँ ये भी सोचना है कि हमें निडल को जो मैनिपुलेट करना है, जो पंचर करना है, यूज करना है, वो किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्यूपंक्चर में जब हम निडल को पॉइंट्स के ऊपर लगाते हैं, तो हमने देखना है कि हमारा DG, जिसको हम ची कहते हैं, हमारी एनर्जी की पैदा हुई है, सेंसेशन फीलिंग हुई है या नहीं। जनरली क्या होता है, कई बार हम, नया पेशेंट होता है जो नए हैं, वो हम ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करते, कई बार उस पेशेंट को पेन महसूस होती है तो हम उसको छोड़ देते। बट नहीं, अगर आपका मैनिपुलेशन मेथड, ये मत सोचिए कि निगल आपने एप्लीकेंट से लगा दी, अगर आपको मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं पता, मैनिपुलेशन आपको नहीं आता, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो सिर्फ निगल पॉइंट का सिलेक्शन करना, मैनिपुलेशन करना, डीजी को अचीव करना, ची को अराइव के लिए हमें एनर्जी जिस पॉइंट पे हम जो चाहते हैं वहां पैदा करने के लिए हमारी मैनिपुलेशन टेक्निक्स भी होनी, कि हमें वहां जो है वो टेक्निक पैदा करनी है, स्टिमुलेशन देना है, रीइंफोर्स करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट जितने भी हमने पॉइंट्स करने हैं, उसको फिर वही प्रोटोकॉल बनाने के बाद बड़े अच्छे ढंग से सिम्टम को देखते हुए हमने सिलेक्शन करने, कॉम्बिनेशन करने। अगर आप पूरी तरह मैनुअल प्रैक्टिस
मैनुअल हैंड मैनिपुलेशन में अगर आपको फील होता है कि आपकी द्वारा हाथ से पेशेंट को पेन हो सकता है, देन यू कैन यूज द इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर. But if you use by the manual practice, that is more effective because after long practice, these हमारे यहाँ वोब्स हैं फिंगर्स के ऊपर, आपको पता लग सकता है कि बॉडी में सी पैदा हुई है या नहीं, कितनी हुई है. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं. अगर नहीं तो आप इलेक्ट्रो स्टिमुलेटर का भी इस्तेमाल करते हैं. मैं डायबिटीज में इलेक्ट्रो स्टिमुलेटर का बहुत कम इस्तेमाल करूँ, या नंबर ऑफ पेशेंट मेरे पास ज्यादा हो या मेरे पास मेरी अटेंडेंट कम हो, तब मैं इसको करता हूं. दूसरा, अगर बॉडी में यंग डेफिशिएंसी है, जीन एक्सेस है, देन आई ऐड द मॉक्सीबेशन. द मॉक्सीबेशन जो है 10 से 15 मिनट इज ए वेरी, आप सुनोगे बुक्स में भी लिखा है आपको कि 10 से 15 मिनट मॉक्सीबेशन. अब कहें 10 से 15 मिनट आप डायरेक्टली एक ही पॉइंट पे मॉक्सीबेशन करते रहोगे तो बस. मॉक्सीबेशन हमें तब तक करना है जब तक स्किन में लिटिल बिट रेड अपीयरेंस ना हो, बर्निंग नहीं है. अगर उस पॉइंट पे बॉडी में बीमारी है और एक्यूपंक्चर मॉक्सीबेशन जब आप कर रहे हो तो मॉक्सीबेशन करने से पेशेंट को रिलीफ महसूस हो. Another, I want to be happy to share with all of you, Dr. Iqbal is also our founder member of your Dr. Courtney's Acupuncture Hospital. He is not only a well practitioner from the modern medicine, gynecologist, and he is very good social worker for every angle. He is trying to help every field of doctors. And today, and the acupuncture institution reach on this level due to with his cooperation. And again, my both daughter is come in this world with the Dr. Iqbal. So I think today webinar of participation of Dr. Iqbal and Dr. Sunita is the speaker. So definitely we achieved some new milestone in the history of gynecology related with the acupuncture problems. So hopefully Dr. Iqbal, by name अगर इसका मीनिंग करें डॉक्टर इकबाल का बुलंदियां. सो बुलंदियां न सिर्फ डॉक्टर इकबाल ने गायनी में इस्तेमाल की, उनके नाम से भी, उनकी सोशल स्टडी से भी, और एक्यूपंक्चर में भी हम लोग जो आज बुलंदियां की है, इस तरह के डॉक्टरों ने हमें जो हेल्प की थी, वो आज आपका इंस्टीट्यूशन एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल पूरे ना कि सिर्फ पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल बुलंदियां हासिल की है. सो आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू एंड बिहाफ ऑफ डॉक्टर कोटने, डॉक्टर इकबाल इज thank you sir for your valuable time spare us. Now we have come towards our speaker, Dr. Sunita Kapoor. Dr. Sunita Kapoor has completed his medical graduation from the Lady Harding Hospital, Delhi in 1982. After getting the graduation from the medical side, she had turned and toward the acupuncture side. He has learned acupuncture from not only from the China, other many countries, Australia, Canada, and very senior most doctor she have trained it. Because being she interested for the research, she is also running a Indira Gandhi study center now for the postgraduate diploma in acupuncture. So she is the also pioneer of the study center of the Delhi Indira Gandhi University. In the whole country, we have running the 9 center of study center in the by the help of the Indira Gandhi Open University. So welcome, madam. And today, your speech and your experience definitely will help us to promote the acupuncture in with the gynecologist. There are so many gynecologists with us, and so hopefully and definitely your speech, your research, and your topic will be boost of the promotion of acupuncture.
Thank you. Today, Dr. Saab, can we allow to Dr. Sunita for speech? Dr. Iqbal? You want me to speak first? Yeah, Dr. Iqbal, you can. Yeah, thank you, Dr. Indrajit. It's nice to see Dr. Sunita, Dr. Anish Gupta, and my old pal, Dr. Indrajit. It's a pleasure to be associated with acupuncture. Actually, I was very close to the father of Dr. Indrajit Dhingra, who was a well-known freedom fighter and a very good social worker, and we used to meet often. Then came Dr. Indrajit in the field, and I think he was very close to me. And right from the beginning of acupuncture, when people did not know the meaning of acupuncture, Dr. Dhingra brought this field in Ludhiana, and we were first in India to start this type of center. We had problems because people were not aware of acupressure or acupuncture, but we have to tell them. And gradually, when they saw the results, I think they got satisfied, and now it's a big institute. Dhingra has almost sacrificed his life for the development and welfare of acupuncture. Now, we need is to associate the science, a very ancient science, although we say origin in China, but it was about many, many years ago, 3000 BC, some people say 100 years in China, but gradually it progressed. But the problem was recognition, and to make everybody believe that this is a science and it needs your kind attention and progress. So Indrajit brought this thing to the limelight, and everybody started now believing acupuncture. Now acupuncture is an entity, and we don't have to explain. They know it. No role in gynae. I think acupuncture has got a role in every part of the human body, and thing is that we should have experts to explore the thing. Now for gynae, there is a center for all these organs, uterus, ovary, cervix, same way for heart, same way for brain. What we have to explore is we have to explore these particular centers. We have to have the knowledge of these centers, functioning of these centers, and how we can stimulate these centers to get the work done. Like this in a gynae, we have sometimes the eggs are not being formed. Eggs are being small. Person not conceiving because of this factor. Now, what we have to find out that where we can stimulate so that we can give more supply to the ovary, we can give more supply to energy to produce more eggs and healthy eggs. This way, we will help in infertility. Same way, menstrual problems. Same way, many other problems of things which we have to see. Only thing we have to assess is whether we are not delaying the treatment of a particular disease like cancer cervix. Now, we may not force them because we may have to see whether our acupuncture can help and how much it can help. So we have to think judiciously and we have to act judiciously. And now we have come to a very standard therapy of acupuncture. I think it's a time to cooperate and we should seek cooperation for all other institutes. And I think we'll first in the world to get a first position. Thank you very much. Thank you, Dr. Iqbal. And Dr. Sunita, please you carry on. Dr. Sunita is presently is the consultant gynecologist acupuncturist in the Sri Gangaram Hospital, Delhi. Welcome. She has experience of acupuncture field in last 31 years. So we want to learn from you. So carry on, Dr. Sunita. Welcome. Thank you, sir. Thank you for the kind words. And I'm really impressed, Dr. Iqbal. It's so nice to share the dais with you. I know we have been practicing acupuncture for infertility even before the IVF came into existence. In China, they used to treat infertility with acupuncture and herbs. And I was amazed at the results. And its inclusion with the IVF started not in China, but in the Western world. In Texas, where I learned that, every IVF center
had an in-house acupuncturist, and every patient who had to undergo any assisted reproductive technology was given acupuncture and herbs along with the Western methods, ART methods. But unfortunately, in India, we are not allowed to use Chinese herbs, which are very good. But of course, we have the alternative in terms of Ayurveda. So we can always combine acupuncture and Ayurveda and help our patients who are undergoing ART and increase the success rate. I won't say it treats the problems on its own, but combined with our Western methods, it definitely increases the success rate. So I have been practicing this treatment of infertility with acupuncture for the last 15 years in a big way, in the sense that I have been to China at least 8 times to just learn how they are treating infertility. Been to US, Canada at least 6 times, and only worked in the infertility clinics to learn the system properly and use it in my practice. And here now I am fortunate enough that most of the gynecologists, about 80 to 90% of the gynecologists of Delhi, they refer their patients to us. Whether they are going in for IVF or any other ART or not, even if they are planning for natural conceptions, then also they send the patient to us. We treat them along with their Western medicines, which have been given by the gynecologist, and we are getting very good results in a combined manner. So I have been giving a lot of webinars on how I'm treating the patients with acupuncture, especially the infertility patients. And there is a series of webinars that I have conducted. In each series, I have included a particular aspect of infertility, means there are different causes of infertility, and I have dealt with all the different causes one by one in each of my webinars. So one of the webinars which was easy to understand and did not require any knowledge, old knowledge or the ancient knowledge of the infertility and TCM, was the one I'm presenting now, in which case you will, if you are unable to read the tongue, you are unable to read the pulse and not able to diagnose and the syndrome affected the patient, you can still practice and treat them for infertility and hormonal imbalances through these points, which I'm going to tell you in this webinar. So that's why I chose this webinar, because it's easy to practice. And everybody who has been practicing treatment of gynecological disorders, including infertility, including hormonal imbalance, including menopausal syndromes, you can use these points and get good results. Okay. So let me start with the presentation. The hormone imbalance, infertility, and pregnancy are clinical issues that require a multidisciplinary treatment approach. Today, we are going to learn Dr. Tan's balance method in acupuncture for addressing these women's health problems, and especially treat the root causes of infertility by tapping into the meridian channels to both diagnose and treat these hormonal imbalances. We are going to use 12 meridian acupuncture approach to diagnose and treat hormonal imbalance. We are going to use all the 12 meridians. Okay. So Dr. Tan's method, I'm sure all of you must be well aware of this method. It's a superb method to balance all the 12 meridians in the body. Okay. It can be explained through 3 simple steps, which offer a universal strategy to treat the range of presenting patients. It helps logically identify and differentiate the symptoms and determine an individualized treatment protocol for each patient. So we need to go through the 3 steps which are given by Dr. Tan to balance all the 12 meridians in the body. Of course, for every patient, the meridians
could be different. We are going to discuss all the meridians and the permutation and combinations which would be possible in different types of patients. So the first step in Dr. Tan's balance method is diagnosing. How to diagnose the affected or the sick meridian. Suppose a patient of PCOD comes to us, right? The patient is not able to conceive because of the presence of a polycystic ovarian disease. So we have to first identify which is the sick meridian in this patient, right? Now, most of the time, the sick meridians which involves the reproductive system pathology falls under the lower abdomen meridians, especially kidney, stomach, ren, dew, dye, and liver meridian. I'm sure you all must be aware of these meridians. So all of them, they lie in the lower abdomen or at the back of the back of the trunk. So they are all lying in the lower jaw, right? Now we have to choose out of these meridians that if this patient has come to us, which out of these meridians is the disturbed meridian. If suppose we are unable to choose that, we need to balance all of them, and we learn a global balancing method, which is started by Dr. Tan, how to balance all these meridians in a patient. Okay. So another thing which we have to keep in mind in a patient who comes to us with the hormonal imbalance. Suppose patient comes to us with a high FSH count and for infertility. We should know which meridian is disturbed in a patient whose hormones are imbalanced. Mostly it is the spleen and the Sanjiao meridian. So we need to balance these two meridians first in a patient who comes to us with a low or a high hormone count. Sometimes we get patients of infertility with low progesterone, with high FSH, with high prolactin. So in these patients, we would be first treating the spleen and the Sanjiao meridian. Then mostly these meridians, these patients, they have their Shen compromised. The Shen is affected because if the lady is not able to conceive, she is very depressed. Shen means our spirit, right? And in our modern medicine, Shen means brain. So and we know according to our modern medicine that it is a brain which controls our reproductive system. The pituitary hormones, they are controlling our ovaries, right? So it's the hypothalamic pituitary ovarian axis which we treat when we treat the heart meridian, and we call it as Shen in terms of acupuncture, right? So first system of diagnosis will include the identifying the sick meridian. Out of the sick meridian, there are many meridians we know of. We should lay more emphasis on the meridians lying in the lower abdomen and the dew meridian. And the meridian, if the patient has got hormonal imbalance, just simply put your emphasis on spleen and Sanjiao, balancing these two, and always treat the Shen by using the heart meridian. That way you will be treating the brain and the pituitary gland as well. Now the step 2 is how to balance which meridians we have to choose to balance the entire system, the entire reproductive system. Here we have to choose either the local or the global balance system. You have to read about these local and global balance system in Dr. Tan's books, which are explained very nicely in his books. I don't have here the time to explain this. So we will have to do global balancing in patient to treat infertility, because local balancing is mainly for musculoskeletal problems, right? So we will be doing global balancing because infertility involves multiple meridians, and all these meridians have to be balanced and brought back into harmony. So local balance seeks to balance one or two meridians, a specific area in the body or acute condition, and not the whole body.
So it's important to remember that even with local balance, the balance method uses insertion of needles into distal and not the affected area to treat the condition. You must be using this method to treat musculoskeletal problems. Okay, but global balance is designed to treat all over body pains, including the functional disorders, systemic concerns, and Shen disorders. And in order to create effective global balance, we need to satisfy two criteria, the dynamic balance and the static balance. Dynamic balance is a balance between the yin and the yang aspect of the body. And static balance is balancing all the using 4 to 6 meridians to balance the entire body. So dynamic balance, this is the yin-yang balance. And static balance, we will be using the 6 systems of the TAN's balance method. So this chart shows all the 6 systems of TAN balance method, right? Suppose I told you that for the hormonal imbalance, it is the spleen meridian which is mainly affected. So if we look at the spleen meridian in the first line, in the first column, we see that the first system which affects the spleen meridian or balances the spleen meridian is the lung meridian. And lung meridian is linked with the spleen meridian because of the common name Tai Yin. Okay, the location of the lung meridian is in the hand is same as this location of the spleen meridian in the foot. So that is why they are called with the common name Tai Yin. One is hand Tai Yin and other is foot Tai Yin. So we balance the lung meridian to balance the spleen meridian. According to the second system, it is the small intestine, which is Tai Yang, which balances Tai Yin. According to the third system, it is the foot Yang Ming, that is the stomach, which is going to balance the spleen. According to the fourth system, it is hand Shao Yang, which is going to balance spleen. According to the fifth system, it is heart. And according to the sixth system, it is spleen itself. So there are 6 systems. So we can use any one of these systems to balance the spleen meridian. Similar way, if we go down, it is the Sanjiao meridian which comes. And again, we have 6 systems which link with the Sanjiao meridian through various aspects. Okay, I will go in detail to those aspects in the future, in the later slides. So this is the way we balance we do the global balancing by using the 6 systems. In system 1, there is a common name sharing, like I told you, Tai Yin is linked to spleen, which is also Tai Yin. And you should needle on the opposite side. If you are treating right side of spleen meridian, you should treat left side of the lung meridian. According to the second, according to system 2, it's the branching meridian. Okay, so you can treat on either side. Again, for example, if we take in this case spleen, foot Tai Yin, you can use hand Tai Yang. You know, it is a yin and a yang balance. Yin will balance the yang, and yang will balance the yin. So if you are using the right side of spleen Tai Yin meridian, you can use left or right side of hand Tai Yang meridian. Third system includes the interior exterior balance. Means if spleen is, again we take spleen as an example, you can use the interior exterior part of the spleen, which is stomach, Yang Ming. You can use the stomach, which should be used on the opposite side. Then fourth system uses the Chinese clock, right? So spleen is 9 to 11. Spleen timing is 9 to 11 a.m. So you can use a meridian which is whose timings are 9 to 11 p.m. Okay, so just opposite according to the Chinese clock. The fifth is the neighbor according to the Chinese clock. In this case, again, like suppose spleen is there, the neighbor of the spleen is
heart. So you can use heart to treat and balance the spleen. And this should be treated on the opposite side. And 6 is the same meridian. You can use the same spleen meridian to balance itself. You can use various points on the spleen meridian. And which points to use, that will be the step 3. So step 1 was identify the disease meridian. Step 2 was identify the meridians which will balance the sick meridian. And step 3 would be identify the points on the meridians which you are going to balance. Okay. Now, after knowing the 2 steps, where it's very important to understand that what type of balancing you would be doing, what type of truss you would be making, right? So on the right hand side, you can see battery on karna. It's very important that we identify which truss we would be balancing, right? So I have given 1, 2, 3, 4 truss, right? So according to these 4 truss, yeah, one of them you can fit inside this human structure, with the head and 4 limbs. And where I have put the yin yang logo, you can fit that truss on that logo. I'll just explain to you how we are going to use this truss. Okay, so few of the truss have got 4 corners and few of them have got 6 corners. Now, how are we going to use the acupuncture points? According to the TAN's method, there is a mirror concept of mapping the reflection between the limbs. For example, we have to map, in this case, we'll be treating the reproductive system. So we have to map the reproductive system on the limb. Normally, the reproductive system is in the trunk. So we are going to treat the reproductive system by mapping its location on the limbs. Limbs would be upper limb as well as lower limb, right? So if we have some idea about the mirror imaging, then we can locate the area of the reproductive system, means the uterus and the ovaries and the areas between them on the limbs, the upper and the lower limbs, right? So according to the direct mirror imaging method, shoulder is reflected on the hip, upper arm on thigh, elbow on knee, forearm on lower leg, wrist on ankle, hand on foot, and finger on toe. And similarly, we can do the reverse imaging. Now, this table, it shows written in the red, if we see that where are the genitals, bladder, sacrum represented according to the mirror imaging on upper and lower limb. They are represented on the wrist and hand in the upper limb and ankle and foot in the lower limb. And this is the reverse imaging. I mostly use the direct imaging for the infertility and gynecological disorders. This fertility treatment involves multiple meridian. So we use global balance, okay, with the following pattern combination. So first pattern combination, there are 2 main pattern combinations. One is for the narrow front, which will be for the organ problems. We use 4 magical meridians of Dr. Tan and 4 magical meridians for the hormone and Shen problems, which will mainly include the premenstrual syndrome, menopausal syndrome, where we have a lot of hormones being imbalanced. Okay, we can combine the 2 magical meridians, the 4 magical meridians of the 2 types of disorders, and form 8 magical meridian to treat any obs and gynae problem. If you are not able to identify the diseased and the sick meridian, just use these 8 magical meridians of Dr. Tan and get the results. Now just remember this figure very nicely. It's the head on top, the right limb,
the right upper limb, left upper limb, right lower limb, left lower limb. And in the center, we have the logo of yin and yang. That means we have to balance the yin and yang on both the sides of the body and in each of the limbs. Okay. Now, first important group was identifying those 4 meridians to treat the narrow front. Now, what is the narrow front? A narrow front means if we have studied the acupuncture, the basics of acupuncture, which says that the kidney meridian is responsible for all reproductive activity, all growth of all reproductive organs. So whenever there is a problem of infertility, the first important meridian which should come into our mind is kidney, right? And if we see the pathway of the kidney meridian on the front of the body, we know that the kidney meridian lies 2 sun lateral to the midline in the chest and 2 sun and half sun lateral to the midline in the abdomen and lower abdomen, if you remember the pathway of the kidney meridian. So it is white in the upper part of the trunk, and as we go down, it becomes narrow. And as we reach the pubic symphysis, it is the narrowest, right? So this kidney meridian, it makes a narrow front as it goes downwards towards the reproductive organs. That is why we call it the treatment of the narrow front. So we are using 4 magical meridians of Dr. Tan to treat the narrow front. Narrow front means the reproductive organs, mainly supplied by the kidney meridians. Okay. So first important meridian that we have chosen is the kidney meridian. Suppose we take kidney meridian on the right lower limb. If you see in the figure, the kidney meridian is shown at the level of right lower limb. Now we have to turn or rotate our yin yang logo from the right lower limb towards the right upper limb. Okay, we have to rotate it clockwise like this. So as we rotate it clockwise, from kidney meridian, we go up to the right upper limb. In the right upper limb, we, according to those 6 systems of Tan's balancing method, we identify that in the right upper limb, it is the large intestine meridian which balances kidney. And again, we keep rotating the yin yang logo. As we go to the left upper limb, we find it is the pericardium meridian which balances kidney. As we keep on rotating, we go down to the left lower limb. It is the stomach. We find it is the stomach meridian which is balancing the kidney according to those 6 systems of balancing, right? So, and you must appreciate that each side of the body has got one yin meridian and one yang meridian. Okay. On the right side, we have kidney, yin meridian, large intestine, yang meridian. On the left side of the body, we have pericardium as yin meridian and stomach as the yang meridian. So this is doing a dynamic balance of balancing yin and yang, and it is also doing a global balance of balancing all the 4 limbs with 4 meridians, right? Right. Now, this diagram now shows which truss we have used to balance the 4 meridians on the 4 limbs. So if you remember, I showed you 4 types of trusses. So we have used the second truss in this case, okay, second from the top, and we have put that truss over here. Now, if you see the 6 systems, if you see that six systems, you'll see that kidney is balanced by large intestine according to system 4.
It is balanced by pericardium according to system 5. Okay. Then if we see large intestine is balanced by stomach according to system 2 and 4, and it is balanced by kidney according to system 4. Right? If we go to pericardium is balanced by kidney according to system 5, and it balances stomach according to system 2 or 4. So that's according to system 1, 4, 5 and 2. We can balance all the 4 meridians. Now it's very important. Now let me also finish the truss which we use for balancing all the hormones. So for that, we use the 4 magical meridians which we use to treat all hormone imbalances and Shen disorders are spleen and Sanjiao. You remember I told you that hormones are produced by the spleen meridian and circulated in the body by the Sanjiao meridian. So we need to take these 2 meridians to balance the hormones. And what will be the other 2 meridians required to balance, to make a global balance? So for that, if spleen is taken in the right lower limb, Sanjiao will be in the right upper limb, heart in the left upper limb, and gallbladder in the left lower limb. Right? So what is the type of truss we form? This is the type of truss we form, which I showed you earlier. Out of the 4 trusses, this is the truss. You will have to learn these 6 systems of balancing. Keep looking at that chart which I showed you. That chart will tell you how I arrived at the heart and gallbladder meridians to form a global balance. Okay. So in this case, we'll be using spleen in the right lower limb, Sanjiao in the right upper limb, heart in the left lower upper limb, and gallbladder in the left lower limb. Again, you'll appreciate that on the right side, I have 1 yin and 1 yang meridian, and on the left side, I have 1 yin and the 1 yang meridian. So we are doing a dynamic balance also by balancing yin and yang, which is the foremost criteria of acupuncture, to balance the yin and yang. Okay. Now we can combine these 2. Now we did 2 types of trusses, and we can combine these 2. No. So on the right lower limb, you can combine kidney with spleen. Right upper limb, you can combine large intestine with Sanjiao. Left upper limb, you can combine heart with pericardium. And left lower limb, you can combine gallbladder with stomach. It's just we have combined the 2 types which we did earlier into one figure. Now, what are the acupuncture points? So for the narrow front treatment, that means for all gynecological problems where kidney is involved, kidney meridian is involved, I told you the location of the area of genitals and reproductive organs we chose were the wrist and hands in the upper limb and ankle and foot in the lower limb. Okay. So if we have to take kidney meridian, to treat kidney meridian in the right limb, the points that we are going to choose are kidney 2, 3, 4 and 7. These are the points which are located on the foot and the ankle, right? Where we had located the reproductive organs according to the direct mirror imaging method. Same way, if you see large intestine points, which are to be on the hand and the wrist, they are large intestine 3, 4, 5 and 6. The pericardium points are pericardium 6, 7, 7.2 and 8. Again, they are on the hand and wrist. The stomach points are stomach 40, stomach 40.5 and stomach 41. Again, on the foot and ankle.
For the Shen disorder and the hormonal imbalance, okay, we can use spleen 4 and lower 3 emperors. If you're using Tung's method, the Xia Sen Huang or lower 3 emperors method points are they are the group of 3 points. One located near spleen 6, second one located near spleen 9, and the third one located 4 sun above spleen 6. So they are a group of 3 points along the spleen meridian on the leg. Okay, and the fourth point is spleen 4. So we can use all the 4 points of spleen on the right lower limb. Then in the right upper limb, we can use Sanja 4 and 5. In the left upper limb, we can use heart 5 and an extra point called Guguan. Guguan is the point which is just below heart 8, heart 7, right? So it's usually we call it heart 7.2 in the here, heart 7.2 in the hypothenar eminence. Then for the gallbladder meridian in the left lower limb, we have gallbladder 41. So that was if we have to use it individually, for the kidney meridian and for the spleen meridian. Now you are confused whether you want to use the spleen meridian or the kidney meridian, and which global balancing method I should do, which truss I should use. So then in that case, if you do not want to, use your mind or you're confused, then you can use all the 8 meridians, okay, and use all these points on all the 4 limbs. Okay? Use the spleen and kidney on the right lower limb, Sanja and large intestine points in the right upper limb, heart and pericardium points on the left upper limb, gallbladder and stomach points on the left lower limb. The location of the 3 points, which are very, very good for all gynecological problems, and especially the ovarian disorders, for the uterine disorders, are the 3 points which are located on the carpal bones. They're called Guguan, Zongguan, Muguan. Okay, the location is shown with the red dots, and the 3 needles are also put on the right side. So the center one belongs to uterus. So I have used this point a lot in cases of dysmenorrhea. One single needle once relieves dysmenorrhea to a larger extent. And the 2 points on the sides are mainly for the ovaries. So if you have PCOD, ovarian dysfunction, premature ovarian failure, so you can use these points. Eggs not maturing, eggs not reaching to this, there's an ovulation defect, so you can use these 2 points on the sides. Usually I locate these points, like Guguan, I locate below heart 7. It lies in the pathway of the heart meridian. So it's heart 7.2. Then Zongguan is pericardium, on the pathway of pericardium meridian. You can locate it below pericardium 7. It is pericardium 7.2. And then Muguan is along on this lung meridian. I located below lung 9. It is lung 9.2. Then there is a group of points on the dorsum of the hand, group of 5 points, especially which we can use in pregnant women when they suffer with a lot of lumbar pain. As the uterus stretches and it causes a lot of lumbar pain, you can use. The lumbar points are forbidden for use in pregnant patients. So, but when they come with a lot of lumbar pain, you have to do something. So either you can use the ear points or you can use a group of these 5 points.
They are at the level of Yao Tong. Yao Tong, you all must be knowing. It's an extra point which is mostly used for back pain. And on the in line with Yao Tang, under each interphalangeal in between the metacarpals, at the same level as Yao Tong, on all the five, between all the five fingers, is the group of these 5 points, which can increase the kidney qi, which is also required during the pregnancy. And these points will also treat the lumbar pain. Now, we also have a group of points which treats the digestive issues and the sometimes gestational diabetes. Some people get gestational diabetes. So in them, we can also do global balancing and use a group of points. On the right lower limb, we can use spleen 9, liver 8. In the right upper limb, Li4, Senja 5. In the left upper limb, heart 5, pericardium 6, and lung 7. And in the lower limb, gallbladder 34 and stomach 36. So these points we can use in the digestive issues which women get, like morning sickness also they get, you can use for that. And when the uterus rises up, they get a lot of nausea, they get a lot of acidity and difficult to eat more as there is pressure on the stomach. So you can use these same points. And if there is gestational diabetes, then also you can use the same points. Other points which I use in my patients of infertility are the uterus point in both the ears. Very, very important. I put the embedding needle on the uterus points. Then these patients have lots and lots of anxiety. So I put 5 needles. They are called Sleep Well 5 needles. They are Yin Tan in the center, then Ear Shenmen on either side, and Amnion. This is for stress and insomnia. Patients who are undergoing IVF cycles, they are very stressed and don't sleep properly. And again, stress and insomnia further imbalances the hormones. So it's very good to combine along with the body points, the 4 limb points. You can give them ear points. You can give them these Sleep Well 5 needle points. And some of the patients who have a lot of PMS, you can give, to relieve the PMS and the neck and shoulder pain during PMS, you can give Heart 5, which again is a Shen point, and Gallbladder 21. This really relieves the head and neck pain. Even sometimes PMS includes a lot of headache. We call it premenstrual headache. So for that also, besides the headache points, you can add Heart 5 and Gallbladder 21 in these patients. These two combination is very good for all the symptoms of PMS. Okay. Then some patients, they have a lot of breast problems, like there is a lot of pain in the breast premenstrually. So you can, for relieving this pain, premenstrual breast pain, or they have hyperlactin level, or sometimes there is discharge from the breast nipple, you can use pericardium points. You palpate in the upper arm all along the pericardium meridian. You will find that 2 to 3 tender spots along the pericardium meridian on the arm. So needling these tender points will relieve the breast problems. So these are mainly the points I use. I use the ear points, I use the Sleep Well points, and the pericardium and PMS points. So people usually ask me how many treatment do they need for the fertility treatment. I'll always tell them, as long as it takes to get you to be pregnant. The longest one took me 2 years, and the shortest one only 1 treatment. So I really cannot pinpoint. But for average, I tell them at least they should be with me for 3 cycles, and I need to treat them in every phase of menstrual period. It has to be in the first phase.
I need to give them one treatment, then phase 2, 2 to 3 treatment, then phase 3 ovulation, at least 2 treatments, and phase 4, luteal phase, at least 2 treatments. So I have to give them treatment in every phase. Okay, and on an average, they respond within the 3 to 4 cycles. But sometimes, like mild to moderate endometriosis, stage 2 endometriosis, it may take a little longer. So 2 times per week for 5 weeks and once a week until you get pregnant, which may last up till 2 years also. And so acupuncture should be adjusted as needed depending on your symptoms. So you can give an homework to the patient also. Patients who are undergoing infertility, tell them to administer moxa with a stick on the lower abdomen for 30 to 45 minutes every day in a clockwise circular motion, and at least 3 times a week. And these are the days when they are not coming to you. So if they are the days they come to you, you should do that in the clinic for them. And the days they are not coming to you, you can give them the moxa stick and they can do it at home. Or they can buy the moxa box, in which you can put the moxa wool, and that can be applied on the lower abdomen. Then dietary recommendations, tell the patient to eat cooked food only. No ice cream or iced water, iced tea, juice, yogurt, cheese, milk, cream, or raw food like salads and fruits. Salads and fruits should be minimum consumed. And tell the patient to keep their lower abdomen, lower back, and buttock region warm. These areas must always be covered with clothing. That means no swimming in cold water or sitting on the cold surfaces. And you can ask the patient to track their ovulation using the ovulation device, so intercourse can be planned accordingly. And instruct the patient to go to sleep early, no later than 10 p.m. We know that from 11 p.m. onwards, the gallbladder meridian time starts, and it's very unhealthy to be awake when the gallbladder and liver meridians are active, most active. So patient should go to bed by 10 p.m. so that he's fast asleep by 11. Okay, and gallbladder and liver really disrupts the hormone cycle in our body. So we should keep very calm and we should be totally relaxed and fast asleep before the gallbladder time starts. So no TV watching or using phones or computers in bed. And ask the patient to lose weight. Most of the patient of PCOD will respond best if they lose weight. Okay. So that was the treatment of infertility. I have few ideas about what we should do once the patient gets pregnant, but this we can skip and keep for the next webinar, which I will present only on how to maintain the pregnancy from conception to birth. Okay, so I was asked by Dr. Dhingra since Dr. Iqbal would be here, so to speak few words about IVF. Dr. Iqbal, I have the entire webinar. I can speak for 8 hours. How we can assist the patients of infertility with acupuncture. So some of this, I picked a few slides from that vast knowledge, which shows that when we should use acupuncture and when we should not. Every patient we should not poke our nose. We should be very careful about choosing our patient. If we are sure that we can help them out and do our best. So I have really divided the patient into having a major impediment or a minor impediment. If the patient has major impediment like blocked tubes and the husband has got a very low sperm count, I said straight away go for ART. Okay, ICSI for the husband and for ladies who have blocked tubes to go in for the microsurgeries. But of course the minor impediment like a very slightly low sperm count,
and irregular ovulation or cycles, and mild endometriosis. In these patients, if the woman is young, I always advise them acupuncture, nutrition, lifestyle, and drugs like Clomid. If the woman is older, I would call above 35, then I would recommend ART along with acupuncture. Okay, so combination of more than one minor factor, if they have more than one minor factor, again acupuncture or ART or combination of the two will be good. Some patients, they say there is no abnormality diagnosed. They have gone through all the reports, no abnormality in husband or wife. So these patients are the ones who have liver qi stagnation. So they do very well just with acupuncture, nutrition, and lifestyle, and they do not require any ART. And I have got umpteenth number of such patients. And what do acupuncture do to improve the outcome of an IVF cycle? It increases the ovarian response. It increases the estrogen levels. It enhances the follicle quality. It does not increase the follicle quantity. That's why I put a question mark on that. Many patients say it is AMH. Can we increase the AMH, anti-Mullerian hormone? We said no, because we cannot interfere with the ovarian reserve. It can improve the sperm vitality. It can reduce the side effects of the drugs which are given for ART. It can increase the endometrial thickness, which is too thin. And so by all this, it can increase the implantation rate. So there are a lot of RCTs, there are a lot of meta-analysis, Cochrane reviews done on role of acupuncture for fertility with lot of parameters, parameters on endometrial thickness, FSH levels, follicular size level, and progesterone level, the corpus luteum level, and blood flow to the ovaries and blood flow to the uterus. Lot of parameters were taken and lot of work has been done. And there's so many RCTs. If you want, I can send them to Dr. Iqbal or whoever is interested. So how does acupuncture help in improving the sperm quality, follicular microenvironment, and egg quality? Okay, and hence increase the outcome for IVF as it increases the blood supply. So in that way, oxygen and nutrients to the testicles, to the follicles, improving the ovarian function by regulating hormone levels like luteinizing hormone, testosterone, and insulin. So we work a lot on insulin resistance with patients of PCOD. It reduces the stress hormones, the cortisol levels associated with reduced IVF sepsis. It also increases the oocyte mitochondrial ATP output and enhances the antioxidant defenses. It also reduces the inflammatory cytokines, the NK cells. So acupuncture improves the ATP production in the mitochondria. This is one of the yang activity of acupuncture. The antioxidants levels are also improved. This prevents the oxidative damage. So this is the yin activity. So these are a lot of points and lot of articles which have come up in different journals. I can give you the details of so many journals: British Medical Journal, British Journal of Obs and Gynae, Cochrane Library, which have come up with the meta-analysis and the outcome in clinical pregnancy when acupuncture was combined with the ARTs. Acupuncture increases the blood flow to the uterus. So this is all about my presentation. Thank you so much for the patient hearing.
And can I take a break for 5 minutes as my Wi-Fi is being disconnected for 5 minutes? And I'll be answering all the queries in 5 minutes. Is that okay, Dr. Indrajit? If you take some short time, 1 or 2 minutes, that's better, because today is the working day for all of doctors, you know. Yeah, just 2 minutes. That's the problem. You can talk amongst yourself. I will be just taking 2 minutes off. Okay. In the meantime, I request to all of you, if any questions, can you write on the web, my WhatsApp? Namaste, sir. The links to these papers. Any doubt, any question? In the meantime, we can think. You know how to get the. Just raise your hand. Yeah. Sir, class was a little bit speedy. Okay. तो थोड़ा सा चाहिए था डिटेल्स में, या तो अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा है. Recording you can get it from my YouTube, no problems. Okay. Okay, thank you, sir. ये जो रवि एक्चुअली जब तक डॉक्टर सुनीता आते हैं, मैं चाहता हूं कुछ अपना शेयर करूं. I have treated the 5 cases regarding those who have under the treatment of some gynecologists from the Amritsar, and that were the abroad cases. They have recommended to me for the most of the these system IVF purpose. So we have taken out of 5, only 1 case we have succeeded and very good results we have got it. And in my experience, and presently I have treated 1 cases, the one young girl from the Australia, still she is under my treatment. She has a very severe problem in vaginal pain. In physical relations, she can't be able to do, and the very burning signs there. With the modern investigation, nothing they have found, no UTI infection, not at all. But the problem is still there, and she have consulted so many gynecologists, but she is not get any recovery. So 20 days ago, I have treated this lady, and same with the moxibustion and acupuncture, and she have relieved the vaginal pain, but still burning is there. So as per my experience, if we combine with the modern medicine, according to the other doctors, it will be very good effect. We can got it. And I have seen in China, the painless delivery is always with the anesthesia, and so many times, many gynecologists. I request to Dr. Iqbalji, if you give some doctors, your daughter or your son, so we can train them with the acupuncture, and you can research your IVF center in your clinic. Because if you will try in your nursing home, and definitely you get the results, and this will be going good message, because you are always in the pioneer of the every system. In the IVF case, you are the pioneer, and the result you are pioneer. बुलंदियों में भी आपका being a name, बुलंदियां भी इकबाल के साथ बुलंदियों में पहुंचा हुआ, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये आपका नाम चलता है. बट हम ये चाहते हैं कि जिन सिस्टम से हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, एक्यूपंक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट मोड बन सकता है अगर हम आपके नर्सिंग होम में इसको कंबाइन करें.
So in the meantime, Sunita will become, if any clarification from your side, any help you need it from our side, we all are ready to give that. Let me thank you, Dr. Indrajit. I am highly impressed with the webinar. I think it was extensive and very knowledgeable and very scientific. Thank you, sir. I think we are ready to cooperate. Anyway, we cannot say no in any way. So we are always ready to cooperate. And I think, Sunita, I am very much impressed. You have dealt the thing very scientifically and step by step. I think it's excellent because I was the one who discovered IVF for North India actually. Even Delhi didn't have that time. I went to Orange Institute, went to PGI, went to everywhere. Nobody had it. And there was nobody to guide us. So we actually discovered our own person because persons in the other part of the India were very secretive. They will not tell. Right. So now what I want is that we should have more collaboration, solve more problems, and I think we'll win. The outcomes are better when we combine the two. Then we should. I am highly impressed. I am very much willing to do anything. For Indrajit, I have never said no for anything because I know for so many years. I started nursing home in 75. We started acupuncture in 75. So we are almost, I am older than him, of course, but I think we are okay. Yeah. And Dr. Sunita, Dr. Iqbal is the one of the founder member of your institution. Wow, that's great. So nice to see so that. every time she is ready to give the cooperation for this, but due to my engagement, I am not able to give the full time to them. So hopefully now this will be again we are trying to boosting the system and want to be more collaboration with them. I think we should do it. Yeah, definitely, sir. I'm sir, always any question there for from the audience side? Hello. Any doubt, any question from any audience? Yes, Dr. Poonam. Yes, Sunita, it was a very good presentation. Learned a lot. I would like to have the links of, what you said, like suppose it's a PCOD, a link to it, papers, is it possible for you to send me? What is it? PCOD like what? Any diseases ki jo aapke links hai, just to kind of go through them also. Yeah, the points? No, not exactly the points, whatever paper you've been prepared or you have those, Okay. It's not only of PCOD, but anything else. Maybe. Yeah. We have so many meta-analysis, so many RCTs. I've got maybe more than hundreds of them. Links to these papers. I can send you the file. No, I wouldn't need just a little bit of it. Because we have done so much of homework, Good. Before putting it in front of everyone, we make sure that we are doing the right thing. Right thing, so, absolutely. Yeah, I've really learned something good. Chalo, I'll wait for this. Thank you so much. Sure. Okay. Thank you, Dr. Sunita. Thank you, now I request to Dr. Anish Gupta ji, please thanks to our chair speaker and our presider, Dr. Welcome everyone. I think you know all about Dr. Sunita Kapoor. There is nothing I should say. She's a complete encyclopedia of acupuncture, and her today's lecture on infertility has proved that acupuncture has no boundaries, and it is also effective in the much complicated cases of infertility. Her today's presentation has covered all aspects of acupuncture related to infertility. Now you can also try acupuncture in infertility. I am also doing acupuncture in infertility with very good results in cases like menorrhagia and anovulation. And I think so. She is a master of everything. In TCM, the person who knows all about acupuncture is called master, and I will also call her master. Sir, master के master नहीं बहुत ज़्यादा बोल रहे हो master के master नहीं बोला we are all colleagues at same level. Really, you are a master. Master. Come on, thank you so much. You deserve this. Yeah. Thank you, Dr. Sunita. Thank you very much. Thank you, Doctor. Thank you. You have spared valuable time for us, and definitely. Anytime, anything for you, sir. Whatever. If you want any help, in your center, if they want to learn something, especially
related to infertility, most welcome, anytime. I have one message for all the participants. And tomorrow again we have one webinar on the headache problems. And our chairperson of resource person is Dr. Tilak Kalraji from Australia. So different way of diagnosis according to the modern science and according to the TCM, the treatment. So he will be share with their experience tomorrow at 4 o'clock. Dr. Tilak Kalraji. Thank you very much to everyone. Thank you. Your valuable time. Thank you so much. Good evening. Good night. Thank you very much. Thank you, Anish. Treatment modality we have, like Western medicine, Ayurveda, or Eastern medicine, or any other medicine. So the basic thing is good history taking. I will not discuss that in detail because we will focus on pulse, tongue, and auricular diagnosis. But some brief points about history is always focus on the complaint which brings the patient to you. आपको जो कुछ और नजर आ रहा है, आपको as a clinician, as a physician, आप definitely उसको अपने notes में रखें. But the key is that particular complaint which brings the patient to you. If a patient comes to you with acute headache or back pain or any pain, and patient is diabetic, patient is hypertensive, he's not concerned with those. If we'll treat appropriately his diabetes or blood pressure, I'm just giving the example. So if the point is we have to focus and plan our treatment according to the patient's symptoms. And acupuncture is such a beautiful and holistic treatment that it does not only treat at the physical level, it also helps on the psychological level, emotional level, and so it treats the patient on a whole human being, not like the Western medicine that for diabetes we are only giving either insulin or oral hypoglycemics or antihypertensive. No, we treat the human being, not just the part of the person. And now coming to the topic, pulse, tongue, and auricular diagnosis, we'll start with diagnosis. What is the normal shape of tongue? Anyone? Heart shape. What is the normal shape of tongue? Normal tongue is conical in shape, right? What is conical? This is conical, like a cone, right? Is this conical? V shape. Yes, this normal tongue is conical in shape. And what special attention we should do, we should ask the patient if it's possible just to brush the tongue. So if patient has taken some food, some hot drink like coffee or some drink like Fanta or Mirinda, the colored food, so that shouldn't interfere with our examination and diagnosis. Then we should, important thing is what season of the year is, and then what time of the day it is, and what is the age of the patient. So keep these 4 things in mind, right? Tongue infection mein, there are 2 important things we focus on. One is the tongue body, right? And the other is tongue coating. Okay? Tongue body is the tongue structure.
What it indicates state of blood, Zangfu organs, and the condition of Yin or nutritive Qi. Yin or nutritive Qi is the form of Qi which is transformed by the combination of the food Qi and the blood coming from kidney and the original Qi coming from the kidneys, that forms this nutritive Qi, and it runs in the body and it nourishes all the organs and cells, right? So tongue body normal color is pink or light red. So first thing is, if the color is pink or slightly red, this is normal, right? वेरिएशंस क्या हो सकती हैं? ब्लूइश पर्पल और रेडिश पर्पल टंग बॉडी. ये इंडिकेट क्या करती है? अगर रेडिश है तो दिस इज बिकॉज ऑफ हीट, और अगर रेडिश पर्पल है तो दिस इज स्टैग्नेशन एंड कोल्ड, राइट? A reddish purple tongue indicates heat and blood stagnation. What we know कि अगर हम blood को stagnate कर देंगे तो it gets purplish, right? So similarly, if there is stagnation in the body or in any viscera, we can have bluish or purplish spots on the tongue in the corresponding area, right? A dark reddish purple tongue that is dry usually indicate depleted fluid due to excess heat, right? If किसी को severe dehydration है और hot weather है तो you will find that is the reddish purple tongue है और plus वो क्या है? Dry है. Then a light purple tongue, bluish purple or greenish purple tongue by body color can indicate cold and blood, so don't need to go in detail that much. तो जो चीजें आपने देखी हैं टंग बॉडी में, दैट इज कि जिसकी जो शेप है वो कॉनिकल है, इट्स अ कॉन लाइक स्ट्रक्चर, राइट? इट्स फ्रीली मोबाइल in all conditions, it's not stiff, it doesn't have any teeth marks, color is pink or light red. So these 4-5 things, if you keep in mind, that is good enough to start with, right? Then the second thing we inspect is thin coating, tongue coating, right? If we see what is tongue coating actually is. Tongue coating is the byproduct of rotten and ripening of the food which is going on in the stomach, that वो जो vapors produce होते हैं उस rotten ripening के नतीजे में, that produces tongue coating. Or if it's thin white, it's normal because we eat food 2 to 3 times a day और वो rotten ripening घंटों चलती है. और अगर हम हमारी पिंक टंग के ऊपर thin white coating, I will show the pictures in coming slide, that is normal. If it is thick white, what will it indicate? As I've said, that this is the byproduct of rotten and ripening of food, which is the function of the stomach. If because of cold, food remains there for longer times or because of liver qi stagnation, it will produce more vapors, more byproduct, and the coating will be thick white. So thick white coating indicates cold and or stagnation in stomach, right? Then yellow coating. Yellow coating, first of all, ask the patient, if you see a thin yellow coating, ask the patient whether he has eaten or drink some colored food, like he has taken tea or coffee, has taken some Mirinda or Fanta or some any tank, something like this, or some colored food. Then if it's so, then it's normal. If it's not because of the food, it indicates heat, right? I'm talking of thin yellow coating.
right? It could be because of food or drink, or it could be because of heat in stomach. But if this is thick yellow coating, that will indicate stagnation and heat in the stomach. How will that happen? That initially, if we we take foods later in the night, heavy oily foods, and then we sleep, initially the patient or the person will have the thick white coating. Once this keeps on for months and years, what will happen? That stomach will, the energy will be drained out, and what turbulence will produce? Heat and plus stagnation. So that will convert the thin coating into thick yellow coating. So normal tongue coating is what it is? It is thin white. Thick white indicate करती है cold and stagnation को. Yellow coating either because of food or colored drink, or it could be because of heat in stomach. And if it's thick yellow, it's heat and stagnation. Right? This is the mapping of the tongue, right? So you can see this is the tip, this is the base of the tongue, right? The tip of the tongue is for upper jaw, right? The tip of the tongue is heart. Behind that, this oval area is for lungs. If you examine, see my tongue closely, you see tip is more red as compared to the rest of the tongue. You can see. Is it? It is. It is for everybody who is into the mental work, thinking, working, Yes, all those things. So when you are working more efficiently, mentally, right, then usually tip is slightly more red. But if it's brick or fiery red, that indicates that extreme restlessness, your mind is not at peace, right? When we talk of mind, कौन सी faculties हैं आपकी? Speech, sleep, thinking, memory, awareness, overall perception, gestalt, all those things are the mental functions, right? And we all know from our physiology that heart houses mind, right? If heart is at peace, what it does will be at peace. Our mental function will have normal relations, normal emotions, or if heart function is disturbed, then we'll have disturbed mind. And similarly, because of some exogenous factors or some acute conditions, we have disturbed mind, and if we don't calm down, we keep on taking stress time and again, our heart function will be deteriorated, right? So this is the front part is, and then you can examine all those patients who have asthma or COPD, chronic obstructive pulmonary disease, right? They will have paler this area, and or they will even have, with chronic condition, some depression in this area. So when you examine, if it's slightly red as compared with the remaining tongue, the heart area, you can imagine in the modern age we all are doing more mental work rather than physical work, so that's normal. And then if lung, if it's acute condition, something like bacterial pneumonia or something like acute condition, will have the redness in this area of the lung. And if it's a chronic condition, we'll have either pale means less pink, and we can have depression as well. And then the major area, center of the tongue, represents spleen and stomach, right? This is mostly we examine the tongue for the function of spleen and stomach. This is this area where we find coating, right? If thin white coating, normal.
Pink color, normal. Glossy appearance means shiny appearance because of saliva. This again is normal, right? No teeth marks, normal, right? Then on the sides of the central part of the tongue is liver and gallbladder on both sides, right? And if you see patients who are more prone to anger, who are angry, who are anxious, who are depressed, right? Hypochondriac personalities, you can have more reddish areas with swollen this part, or even in chronic condition where there is liver blood stagnation, will have purplish or blackish spots in this area, right? Then base of the tongue indicates kidney, bladder, small intestine, large intestine. So this is the upper jaw, front of the tongue. Middle major part is the middle jaw, spleen, stomach, liver, gallbladder, gallbladder on sides, and spleen, stomach in the middle. And then base of the tongue is small and large intestine. This is, you can see the thin white coating, no teeth marks, right? And these are the pictures they were shared in a group a couple of days back, and so I'm using these pictures. Thank you, Dr. Sayyid Fazul Hassan, for sharing these pictures. Then the next condition can be chi deficiency. अगर हम बात करें chi deficiency की overall symptoms क्या होती हैं? It's fatigue. कि आपका जो पेशेंट है वो थोड़ा सा काम करके थक जाता है, पुअर एपिटाइट, कि भूख कम लगती है, स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद एक्सर्शन, कॉन्टिन्यूसली थिंक करता रहता है, उसको समझ भी नहीं आ रही होती कि क्या सोच रहा हूँ या सोच रही है, और बहुत ज्यादा वरी करता है, परेशान रहता है, फियर ऑफ अननोन, वरिंग अबाउट अननोन थिंग. तो दिस इज बेसिकली the general symptoms of chi deficiency. अगर हम टंग को एग्जामिन करें तो क्या है, यू सी, इसके अगर हम ऊपर वाली के साथ कंपेयर करें, दिस इज दी पिंक, नॉर्मल पिंक कलर और लाइट रेड, राइट? एंड अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, दिस इज नॉट एक्चुअली पेल बट इज लेस पिंक, राइट? It's not shiny, it's not glossy, it has red marks, and then you can see teeth marks, right? When there is chi deficiency, that means yang deficiency. और yang या chi जो है वो fluid को mobilize करता है. जब chi deficiency होगी तो fluid mobilize नहीं होगा, fluid accumulate करेगा, और tongue जो है slightly swollen होगी, और जब वो swollen होगी तो वो teeth के against जो है वो press करती है, तो you will find the teeth marks on the sides of the tongue. और अगर हम ऑर्गन की बात करें तो कौन से ऑर्गन की डेफिशिएंसी में हमें टीथ मार्क्स मिलते हैं? वरिंग, ओवर थिंकिंग, ये किसके फंक्शंस हैं? स्प्लीन के. तो यू कैन रिलेट सो मेनी थिंग्स. कि पेशेंट आता है, आपको टंग दिखाता है, यू सी कि इट्स अ पेलर टंग, शाइनी नहीं है, उस पर ये रेडिश स्पॉट्स हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस पर टीथ मार्क्स हैं. You can definitely without asking, you can know this person will be fatigued. Again, appetite is the function of spleen. Then central chi, sweating, right? Shortness of breath due to lack of energy. All those things are spleen deficiency. And this is basically spleen chi deficiency, right? Then yin deficiency or fluid deficiency. When we talk of yin deficiency, this is basically stomach yin deficiency, right? Or heart yin deficiency. उसको differentiate हम करेंगे definitely कि जी हमने ये suppose कि इस patient ये आ गया है इस tongue के साथ. अब मैं कैसे differentiate करूँगा? ये differentiate करूँगी कि जी this is stomach yin deficiency or heart yin deficiency. First we come to the features. There is
very little or no coating. It's red, and especially, right? And then there are cracks, right? So this is one picture. इसमें अगर आप देखें जो heart वाला area है, this is fiery red. See, this upper jaw, whole upper jaw is more red, and the middle jaw area is not that red. ठीक है? So heat in this area means heat affecting the heart, right? Causing heart yin deficiency, right? So ये जो symptoms हैं, hot flushes, night sweating, insomnia, irritability, ringing in the ears, menopause, irregular menstruation, all these things will be related, right? And if, on the other hand, we see a patient whose this thing is normal, but this is more red, and there are not cracks like this, that will be stomach yin deficiency. Stomach yin deficiency का patient किस तरह से present करता है? There is absolutely no coating here, right? Patient खाना खाता है, उसको थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है. If we talk of endocrinology, I'm not endocrinologist, but generally जो hyperthyroid patients हैं, जिनकी एपिटाइट ज़्यादा है, जिनका BMI ज़्यादा है, BMR ज़्यादा है, not BMI is BMR, basal metabolic rate, वो ज़्यादा है, और प्लस तो so that is basically stomach yin deficiency. और तो so generally अगर yin deficiency है तो we'll find कि जी little or no coating, cracks हैं, red tongue है, all those things. और अगर heart involved है तो हमें ये symptoms मिलेंगे. स्टमक इन्वॉल्व है, इंक्रीज्ड एपिटाइट, इंक्रीज थर्स्ट, और वो टाइप 2 डायबिटीज जब अनकंट्रोल्ड होती है तो वो उसके साथ भी रिलेट करता है. पॉलीफेजिया, polyuria, all those things. Then next pathology of the tongue is damp retention, right? Damp या phlegm retention. Again, कब होगी? दो वजह से होगी. अगर कॉन्टिन्यूसली हम डैम्प सीजन में, डैम्प कंडीशंस में काम करेंगे, या हम डैम्प फूड्स जो हैं, आइली स्पाइसी फूड्स हैं, उनको हम कॉन्टिन्यूसली नाश्ते में पराठे खाए, दोपहर में we take oily spicy foods with मैदा, naan, all those things, and again late night खाना खाया लेट के, that will cause damp retention in stomach, right? और उसकी वजह से क्या हमें मिलेगा? हमें white and greasy coating. This is thick white coating. And then tongue will be swollen, and we may have teeth marks in the later condition, but will not have the teeth marks in the initial condition. But once it persists and tongue is swollen, इसका size increase करता, वो teeth के against जब persistently पड़ी रहेगी, तो जो टीथ मार्क्स हैं वो क्रॉनिक कंडीशन में आएंगे, जैसे हमने पहली तस्वीर में कहा, जहाँ पे क्रॉनिक स्प्लीन ची या ची डेफिशिएंसी है. तो इस डैम्प रिटेंशन में क्या होता है? पेशेंट इज ब्लोटेड, उसको ऐसे जैसे पेट भरा भरा है, अफारा जिसको हम कहते हैं. देयर इज फुलनेस इन चेस्ट, फुलनेस इन एब्डोमेन, फील्स हैवी के लाइक के लिए उसने 10 मन वजन उठाया हुआ है, लेथार्जिक, यदि थोड़ा सा चलेगा थक जाएगा. सो अगेन डैम्प रिटेंशन बेसिकली फूड, आप जब ऑयली स्पाइसी फूड्स कॉन्टिन्यूसली खाते हैं, इरेगुलर है, वॉक एक्टिविटी नहीं है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से ये सारे फीचर्स आएंगे. देन yang डेफिशिएंसी, राइट? yang डेफिशिएंसी में हमें टंग में क्या मिलेगा? Again, thick white coating. See? And then pale is not that pink. It's pale pink. ठीक है ना? And swollen as well. Right? क्या होता है पेशेंट का? पेशेंट को क्या करता है जी? Feel cold easily, always need warmth, pale complexion, will complain of low back pain,
tendency to panic, छोटी छोटी सी बात पे heartbeat or that panic episode, emotionally low esteem, patient can have impotence, infertility, all those things. Then this is the last condition. I hope you are not overdoing it because it's more than 75 minutes. We'll take another 15 minutes maximum. This condition shows when it's heat, it's yellow coating, right? And if it's heat with stagnation, this coating will be thick, right? It will be yellow, but it will be thick. So simple heat is thin yellow coating. Heat and stagnation is thick yellow coating, and the tongue would be red. See, overall red tongue. Then patient will sweat easily, will be constipated due to lack of yin or fluids, will be irritable because why will be patient irritable? We all know that heart is the house of mind, and heart blood provides cushion for mind to stay in the heart or house. So when it will be fluid deficiency, that will be blood deficiency, or heart blood deficiency will lead to all these symptoms, right? Patient will be irritable, jaldi gussa aayega, cheezein bardasht nahi hongi, neend nahi aayegi, so many different things, right? So मैं ब्रीफली एक दफा फिर दिखाता हूँ, आप इसको खुद से भी देख सकते हैं बाद में. दिस इज द नॉर्मल टंग, thin white coating, appearance pink, no teeth marks, freely mobile, and all those things. Then deficiency, chi deficiency, especially spleen chi deficiency, teeth marks, red marks, thick yellow white coating hai, right, and all those things. Then gene deficiency, you see red, agar heart involved hai, this part is red, agar stomach involved hai, so this part would be red. Then all these conditions. Then damp heat means again white greasy coating, then swollen tongue, initially no teeth marks, later on teeth marks. Then heat, yellow coating, agar heat plus stagnation hai to thick yellow coating hogi, then these conditions, right? And again, before going to the next last section, Dr. Chetna, if there are any questions, we can take those questions. Anybody have any question, please? You have explained very nicely, sir. I think nobody wants to ask anything. So please, you proceed further. Whether I have explained very nicely or whether I have explained nothing. So No. It's really nice. Thank you so much. Thank you. So next is ear or auricular diagnosis and few points about auricular acupuncture as well. Dr. Sajjad? Yes, sir. Sir, एक डॉक्टर साहब ने हाथ रेज किया, क्वेश्चन करना चाहते हैं. सर चल मैं चेतना. Yes, sir. एक बेटे वो डॉक्टर ने बीच में से हाथ रेज किया था, उनको बोल दो बेटे. श्याम सुंदर जी हैं. एक सेकंड. सर मैं लेक्चर Mr. Shyam Sundar ji, if you want to ask anything, please unmute here and ask the question. ठीक है. हाँ. So any questions? Sorry. Yes, sir. Good afternoon to you. I just wanted to know whether the recording of this will be available to us for further understanding. Yes, sir. This will be available on the page, Dr. D.N. Cortez Hospital YouTube page. It will be available there. So don't worry about the details. You just ask the question if you want to ask to Dr. Shehzad. Yes, question is in case of the heart problem, if it is heart is going to be just smash, I mean to say heart attack, how will you understand with the tongue? Sir, I will explain that, but we should, as a practitioner,
there is no modality which is as comprehensive as to cover all the emergencies. So heart attack is an extreme emergency. That will never give us that time that so we can examine tongue or something like that. But in severe heart attack, it's basically the blood stagnation, right? So in specific part that some clot or something like that obstructs blood flow to certain part of the heart. So in that, so we can have some acute purplish or some acute paleness on the tip of the tongue. That is one thing. But my request to all is the best thing I like about the Western medicine is the emergency care and the surgical care. Acupuncture is not meant to treat acute MIs or acute. We can give some points, right? We can ask the attendant, you can press heart 7, pericardium 4 for emergency. This will definitely can give, add some time to the patient while he is being shifted to a tertiary care or any emergency facility where he will be treated or she will be treated appropriately. So we should never ever try to treat acute emergencies in a way that we can handle those with acupuncture. The only thing is there are certain emergency points which can help and can save the lives, but patient should be shifted by giving those points, or we can ask the patient to keep rubbing heart 7 from heart 7 area to heart 5 area like this, and then one point is pericardium 4 because that immediately dilates blood coronary arteries, which is the cause of heart attack. So pressing pericardium 4 and massaging heart 7 to heart 5 area can help, but taking the patient to the emergency or performing some intervention or giving streptokinase or some other medicine will help a lot. Any other questions, sir? No, that's all, sir. Thank you very much. So nice and very nicely explained, sir. Sir, my pleasure. Sir. Anybody else wants to say anything? Yes, madam. Sir, namaste. In tongue, sir, we will see straight line. What it will indicate, sir? What in tongue we have seen? Straight line in middle. Right. Lines or cracks, right? Again, I have omitted that way, but normally we can see a central crack. It's not very deep. That is indicative of mental function. Again, that you are working like teaching, reading, being physician, all these things are that you are continuously working mentally, right? Then if we have deep crack in the tongue, central, that usually we see in bipolar disorders, in patients with chronic depression and especially schizophrenia or bipolar disorder. Then if we see specific cracks in the specific area, like in the area of spleen and stomach, that will indicate a chronic condition of that. The cracks in the tongue are indicative of the chronic condition. First, if there is deep central crack, this is the dysfunction of heart and mind, right? Bipolar disorder. If there are horizontal cracks, not a vertical crack like this indicative if in the area of spleen and stomach, dysfunction or chronic dysfunction. Then cracks on the sides, dysfunction of liver and gallbladder. Then in the area of lung. So you can relate those cracks to the chronic dysfunction. Any other thing? Yes. Hello, one question, sir. If the tongue is like geographical tongue, like map, somewhere is a coating and some is very shiny. So what geographical tongue is usually indicative of autoimmune conditions. Autoimmune conditions means those diseases in which body's immune system
due to some unknown cause or unknown pathology, it starts fighting with the body itself. There are so many different conditions: multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylosis. Usually, geographical tongue is related with the autoimmune condition, but in certain families, you find geographical tongue without any obvious reason. So it can be non-symptomatic as well, but generally it is related with the autoimmune conditions. The patient has a severe acidity, so the tongue is like this. So severe acidity. Yes, it can be, no doubt. Okay, thank you, sir. Thank you. Hello. Should we move? Haji, Dr. Shazad, good evening. Good evening, Chote. हाँ जी डॉक्टर साहब मेरी सुई वहीं पे अटकी हुई है. आपने जो क्वेश्चन पूछा था भी बाद में पूछेंगे अबाउट रैपिड एम्प्टी पल्स. तो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग एज यूजुअल, पर ये जो आपने थोड़ा सा वो That is to keep all of you awake. आपने बोला था कि it could be so what could be, whether it is a like yin deficiency or something like, है ना, उसमें दो चीजों में थोड़ा सा है. क्या था मेरा, जरा बताइएगा. आपने बोला था एम्प्टी रैपिड जो पल्स है उसमें दो चीजें हो सकती है. रैपिड एंड एम्प्टी पल्स, उसमें दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है. यस. तो वो दो चीजें कौन सी है? इन माय ओपिनियन वेदर वन इज यिन डेफिशिएंसी आई थिंक, एंड व्हाट इज द अदर वन. या तो अगर उसमें हम टंग भी साथ में देखेंगे तो हमें कोरिलेट हो जाएगा, है ना. Yes. That was my point कि जी जब हम ये बाकी चीजें करेंगे उसको हम रिलेट करेंगे टंग के एग्जामिनेशन से, हिस्ट्री से, पेशेंट की प्रेजेंटेशन से, और प्लस आपकी जो बाकी दो टूल्स हैं, आपका ऑरिकुलर एग्जामिनेशन एंड द टंग एग्जामिनेशन. ब्यूटीफुली सेड सर. थैंक यू. थैंक यू.